Maybe each panelist will request to give their expert views because there are various challenges, issues, and how do we really bridge the gap in the supply chain management from collectors, aggregators in the forest because 85% of the raw material comes from the forest. And if we really
make the ease of doing the business from the forest to the consumers. I think the sector would be really happy, and we are eager to listen from various good news from your side, how we really can support the medicinal plant growth in the country. So I not wasting the time, but I just come to each panelist and we maybe go to our esteemed experts to stick to timeline and maybe can give us brief us your views and how do we bridge the gap and how do we promote supply chain management within 4 to 5 minutes. So as Meenakshi Negi, the first question to Meenakshi Negi madam because she is also looking after as additional PCCF in Karnataka and Karnataka she has developed the success story in promoting the medicinal plant sector in Karnataka. So madam, an estimated 85% of the medicinal plants in annual commercial demand is sourced from the wild. To strengthen the medicinal plant resource base in the country, NAPB has supported more than 1 lakh hectare area under conservation of medicinal plants through different state forest departments. Now, may we request you, Madam Negi, to enlighten us further that how can we strengthen the supply chain management of medicinal plants, raw material source majorly through wide collection from the forest. We also request you, Madam, to kindly share your experiences from the state of Karnataka and any particular mechanism for best practices which can be implemented throughout India because you have really developed a Karnataka model as a success model to promote medicine like that. Maybe give big hand to Madam Meenakshi. So, आदरणीय मंत्री भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सीओ for the guys. Not take too much time. Actually, I have 4 or 5 slides. I have many, but I'll stick to the time. I'll just show you 4 or 5 slides. The question that is asked of me is how to the supply chain, what it is today and what it should be, right? So that is the question, and I will just go through the slides. Next. So if you see the supply sources, where do we get the medicinal plants from? There are species that are found only in the wild. You cannot get them from anywhere else. Species that are found in the wild and also being cultivated. And there are species that are not found in the wild, but are found only in cultivation. And there are species that are partly imported with some domestic production, and species that are completely imported. Right? So this is the whole basket of the supply sources. So basically, we have wild, we have cultivation, we have imports, but in different the way it is put in front here. And the supply chain for each one is different. I will stick to the wild because that's the question given to me next. So a normal supply chain, a very simplified supply chain looks like this. In from the wild, you have collectors at the bottom of the chain, right up to industry at the top. And in between, you have various other players like government corporations, some places there are mandis, there are village forest communities, there are SHGs. But this is the supply chain which is a very simplified version. Sometimes the industry also purchases directly from the collectors, but it's very rare. Next. So this is actually one study. Since I'm in Karnataka, we have tried to understand. Elanthus basin, many farmers and cultivators here will be knowing, is that region from the Elanthus tree. And this is the existing supply chain. As you can see, the writers, there is a person known as a writer. He's appointed by the contractor. He is in direct touch with the people who collect the plastic. Now, these trappers and collectors are the poorest of the poor, you all know that. They live on the forest budget. They collect and give the entire release to the village collection agents. Every village there is a collection agent. The writer then is in touch with the village collection agent, goes to the contractor, and from there it goes to the market. This is what is existing today. What I am suggesting is an alternate value chain would be tappers and collectors, give it directly to the village forest committee, goes to, now every village will have a village forest committee. That every village forest committee cannot possibly market its produce.
they can be, which actually there is a mechanism, sir, MOU में MOU के तहत में ये mechanism है, जिसमें कि BSCs है and they are all federated at the district level. So there is a federation known as the Forest Development Agency. वो अगर ये सारा मार्केट कलेक्ट करके और सेंट्रलाइज्ड FTA हो, वहां से मार्केट्स में चला जाए, तो it will be a much easier and much cleaner and a much transparent chain, rather than what it is at present, which is very opaque, and many of my industry friends will agree that they find it very difficult to access material which is coming from the wild. This is a very good, this is a study which I have done, sir, and I found that the easiest chain would be that, and it's very much doable. क्योंकि ये सब exist करते हैं, BSCs भी हैं, FDA भी है, topics भी है, हमें clear chain है, tappers and collectors at the ground level will get a much better return from it. So this is one suggestion. तो मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या किया जा सकता है, एक ये किया जा सकता है. Next, so this is a very one. And who is the writer? Now, if you look at why government cannot do it and why the contractor can do it, because उनका एक ये writer कर्नाटका में उसको writer बोलते हैं. He is a very prominent stakeholder, as you can see. He is appointed by the contractor on a commission basis, sometimes on salary. He is in touch with all the tappers, collectors. वो lean season में क्या करता है, sir? I'm sure some of the traders would be knowing all this. वो lean season में इन tappers और collectors को एक fund मतलब he provides money. So they are beholden to him. Government का क्या है कि we cannot give advance money to tappers and collectors. हम तो क्या करेंगे? जब वो tapping collecting कर लेंगे, हमारे पास आएंगे, तब हम तोलेंगे, देखेंगे तो उसके पैसे देंगे. So which may naturally the collector would rather go to the writer, in this case the contractor. So the writer, what does he do? On the one hand, he is in touch with the tappers and the collectors, on the other hand, he liaises with the forest department. He has the traditional knowledge, which I have written in brackets apparently. He says कि हमको सब पता है. In particular, highlanders में क्या होता है? Tapping करने के बाद count and apply करना होता है, which is the traditional knowledge. He says he knows that. So लेकिन इसमें he is in the environment of the contractor. He has to ensure maximum production. अगर maximum production करना है तो unsustainable रहेगा ही नहीं. वो तो unsustainable हो जाता है. Slowly the trees die and slowly we lose the resource. So alternate value का बहुत जरूरी है. So that is my suggestion. Next, I have some more slides. Just one point. So what I am suggesting is देखो medicine plants पे बहुत research हो चुकी है. Taxonomy, availability, quality, agro-techniques, drug discovery. Today you saw all stalls which are there, people are involved in all this. But there's very little knowledge on what is happening at the ground level. What is the institutional framework in which we are working? And India is a storehouse of biodiversity, traditional knowledge, modern science, सब कुछ है. तो हमको क्यों नहीं potential मिल पा? तो मेरा ये hypothesis है कि इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि जो हमारा institutional framework है, that still needs a lot of work to be done. What is institutions? Just one slide on what I mean by institutions. Many know, but just next slide, please. This is what are institutions. So values होते हैं. Society places some value on for. उसके जो value होता है उसके हिसाब से कुछ norms बनाता है. जब तक तो ये बहुत simple रहता है कि एक value एक norm है, तो there are informal rules of behavior. जैसे कि आपने गांव में देखा होगा जब सिंचाई का सीजन होता है तो नदी से पहले ये फैमिली पानी लेती है फिर बोल लेती है. इस तरह का भी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होता है. So that is traditional knowledge which we do. But when things get more and more complex, we need to come out with enforceable laws, rules, laws. तब हम parliament rules laws बनाते हैं. इतना complicate हो जाता है. And that is the reason why we have the governance structures which we have at the bottom. एक example देने के लिए value, for example, left hand side में आप देखिएगा. Value is that what is society's value? Society places value on the safety of citizens. Right? What is the norm? They say, okay, you drive. Let us stop in terms of traffic. So the norm is that we should drive safely. उसके लिए कन्वेंशन बनाना पड़ता है. ड्राइव सेफ्टी का क्या मतलब है? वो कहता है ठीक है एक साइड पे ड्राइव करो. We drive on one side of the road. तो वो एक कन्वेंशन हो गया. ये जनरली जब तक तो छोटा सा सोसाइटी है, एवरीबडी अग्रीज की ठीक है हम लेफ्ट पे ड्राइव करेंगे राइट पे ड्राइव करेंगे. बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको फॉर्मल करना पड़ता है. फॉर्मल करते हैं तो फिर वो बहुत बड़े गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स चाहिए. फिर आपको ट्रैफिक लाइट्स चाहिए, ट्रैफिक पुलिस चाहिए, रूल्स चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए. जब लाल बत्ती होगी तो आगे नहीं जाना है, ग्रीन बत्ती होगी तो जाना है. So all that is nothing but a governance structure. That is the institutional framework. A full institutional framework. Next. अगर medicinal plants पे लगाया जाए, so it is rules of the game. I will not go get into the details of this. Many people know.
Why do institutions exist? They exist to minimize transaction costs. What happens? Why is the problem? Because there are vested interests beyond world. Vested interests say we want to control the institutions, we want the rules and regulations to work in a particular direction. So ये problem आता है. Next. So अब medicine transfer. Next slide, please. So medicinal plants may be especially relevant if you see the last slide. All this is especially relevant for medicine plants from the wild. अब इसका एक ही एग्जाम्पल आप देख लीजिए. जो फॉर्मल हमारे रूल्स हैं, जो नेशनल मेडिसिन प्लान बोर्ड है, वो कुटकी को कल्टीवेट नेशनल मेडिसिन प्लान बोर्ड कुट को कल्टीवेशन के लिए सब्सिडी देता है. वाइल्ड लाइफ एक्ट उसको बैन करता है कि इसको ट्रेड नहीं कर सकते. Now this is the difference of the value I place on could. NMPV places the value that it should be used in medicine. Wildlife Act places the value that it should be conserved. Right? So because of this conflict, there is a conflict of interest, and therefore there is a conflict in the conventions. So मेरी यही गुजारिश है सेंट्रल टीम से, मंत्री जी यहाँ पर हैं और विभाषक से कि we have to basically harmonize all these rules and regulations, taking care of sustainability, मतलब protection भी हो और industry के requirement भी meet हो. This is all for now, sir. अगर बाद में कुछ और questions होंगे तो I think I'll overshot by 1 minute. Thank you so much. इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए, कहाँ से चाहिए? फॉरेस्ट से चाहिए. मंत्री जी और सभी माननीय यही कहेंगे फॉरेस्ट की संपदा सुरक्षित रखने हैं, वे दोनों का हम कैसे मिलाप करेंगे? मैं भी डिस्कस. नेक्स्ट. Conservation and cultivation. Continuing the discussion, I would like to ask Professor Satyajit Murthy, former Director of Medicinal and Research, Anand, Gujarat. He has got a very vast experience in the area of cultivation and quality planting materials. So I would like to ask, quality planting materials is prerequisite for the commercial cultivation of medicinal plants, as we know. In this aspect, NMDB has supported more than 1,000 nurseries for the farmers, for the NGOs. So now we request Professor Matthew to kindly share his views on the interventions required to ensure QPM availability all over India, and also highlights his experience to supply quality raw material. Please, sir. Panelists in the this Gaiis have been given the two responsibility of speaking on the quality quality of the road. See, if you see the quality planting material, yes, that the ball has been started rolling, and the number of nurseries have been already recognized by this NMDP. But one thing I think that we must see that in medicinal plant, it is not a single species, it's a commodity. And when you talk about the commodity, you see that there is a diversity of the species, diversity of the genetic material, diversity of the ecosystems, and all these are playing in the planting material. If I see that planting material, you will find that this quality planting material can be of two kinds. One is the true seeds, and another is the quality material. When we talk about the true seeds, I will talk mainly of the true seeds. And true seeds, what are the things missing here? In that, if you see that the true seeds has become brought the green revolution in our country, because the seed structure and seed supply structure was strengthened in that way, and that is missing in this one. What is the missing here? Here is a seed certificate. Here is the formal seed group. You know that the Seed Act came in 1960, and there are a number of the plant species, and those species will be recognized for the certification. And here in medicine, there is no agency here. You use the certification, and that is why that planting material, when it goes to the what is called cultivation, many times you find that what. Second thing is there, if you see that the seed chair,
a breeder really no, identify a variety and it is notified by the government of India. Once notified, then there is a the seed can start with there is a foundation seed, there is a foundation seed before that there is leadership, foundation seed one and two, and then it comes to that certified seed. Certified seed goes to the cultivator. But here in this, if you see that in this one, but none of the kind of agency who can produce the seed and is there in certified system. So whatever it is there, whenever there is a what is called demand, so anything for the cultivation. As a result, that we are not able to harness what is called the importance of the variety. Second thing is that what is missing the process of certification. Process of certification also in this we have totally missed here in medicinal plants. And you know the process of certification means that there will be inspection, before flowering inspection, there will be seed production area, and there will be inspection after 50% flowering. And then so this inspection process is not here. So therefore, so you know about the quality of it. These are and there are things all these things are not very clearly defined in medicinal plant. Whereas that if you see the Christian has brought in the wheat and rice, it is because of all these things have been done. Secondly, the formal the seed production program, if you see that, it is also missing. But I have said now that once the breeder seed is produced, then only after the goes to the farmers, that is for the certified seed. But here nothing is there. Informal system. A research scientist, what is called produced a variety, and the variety so there is no maintenance period. After a few generations, you know that feeding is required. That is also missing. I think the NLP has to think about that. That these are the can probably that. And second thing is that very important thing is that in medicinal plant there is no intention system. See, in wheat and rice, if you go today, if you want that 4 quintal of the certified seeds, the one the producing the certified seed in 5 years before from the bigger seeds. You can back them so that what is the quantity of the seeds required to produce that much of the quantity of certified seed. That 5 years in advance they are rejected. But here you know that I was very interesting. So that our director general has what is called responsibility of our institute that you have so many millions of fortune you have to supply within 6 months. How is it possible? See, these are the things one has to understand. Yes, a fortune seed it germinated. So 2 to 3 years after only that. So like that, I think that second thing that it's a vegetatively propagated material is very good. It's a very easy in that way because you don't need much certification system there. But one thing is there that you will find the vegetative seeds are always the multiplication is less. You 14 plant, one plant. So that one requirement of seeds also requires a lot of area. And again, required here also, I would say. And but I have another important thing. Foresters are here. I would like to flag this thing, and it is happening. I have seen that foresters they are nicely identifying a plastic. But when somebody asks the material, the seeds from that plastic is here. Oh no, that is not. You have to understand the science. The science is that every tree is a heterozygous. Heterozygous means each seed will have a different the genetic identity. And each seed. So therefore, what you have to do? Plastic. And you will get to work for the propagated how you can be being you have to standardize. And that has to be taken as a not that plastic seeds. So these are the things we have to, I think that we have to do. Now coming to that, I will go to this. I have here one thing I think the medicinal plant board can think of that
we have to see propagating material. We have to think of like isobolsena and all those things. What we can we have not done that thing, and that's why what is happening. The whoever is getting the material, they are going after that. So that is one thing. And quality, raw material, raw target, important area. And I think that NMDB has done a wonderful job by what is called doing the GAP and GMC standard. But before that, I see that the challenges before the Irish drug industry are the four things. One is that safety. Second thing is the right efficacy. Third thing is the contaminations, and contaminations are what are the contaminations? But all these things start coming from the field. Very interesting on the way. You will see the from cultivation instructions. And from I've seen who starts from the stories and like that. So this has to be what's called certified. And NFA should get the GMP and GMCD and the GMC certificate. On the Council of India 2011. And you know that what the GMP and GMC, and that would guarantee the quality of product, and that will also but they will have more confidence on this, and also maximize the output of the sustainable ability of the product. So this is now I come to the 11 years have passed now. The when the certification has done, all the certification was initially initiated, but today, the big company, nobody has come forward for the certification of their and second thing is that I am having the problem with why will have problem of this what is happening and why it is happening. If I have to tell the house ICE industry that voluntary certification to let compulsory certification, otherwise simply the good manufacturing practice, the standards of medicine for one. Because if the computer like this, garbage is so if the raw drug is not quality and the quality, then it is not the quality. With this, I think that good that systems what is there GAP and GHC certification is also will take care of the quality. Because GAP and GHC standard there it has been also a very good thing has been already given, and that's why that this will guarantee the high quality of medicines, effective and safe to use, and it also environmentally sound and sustainable availability of the raw drugs, and it will also help benefit both the producers and users. But one thing I would ask that industry should come forward and demand the certificate, not the farmers and the collectors should be in another way go for the certification. With this, I thank you very much. I thank NP for giving this opportunity. But within very short period of 5 minutes, whatever I could say, I could. But if any questions there, I will be happy to answer. Yes, and we have Balakrishna Maharajji. He has joined from the Paris. We'll come back to you, Balakrishna Maharajji. So before that, maybe come to the industry because as Professor Maiti has mentioned that industry should come forward for the certification of the raw material and garbage in is the garbage out. So that I think that's the buzzword we have to take out, improve the quality of the raw material. Or GAP and GMCP is also the word which we have to follow. Of 18 months. NMVP has been working to create market linkages between farmers, collectors, and industry. And for this, we have also launched a platform by the name of Each Other, which has more than 30,000 downloads and more than somewhere around 7,000 registered users. We have also created an NMVP helpline to facilitate the supply chain of medicinal plants, wherein different stakeholders from the medicinal plant sector can
the issues of the stakeholders can be addressed through that helpline. NWB regularly organizes buyer-seller meets to facilitate trade of medicine. Now we can see that Chaturthai Chaliji, he is president at farm, and we would request sir to share his inputs, like how can we address the issues of cultivators and the companies wherein we can ensure the supply of quality raw material to the industry, and at the same time we can increase the livelihood of the cultivators who are engaged in medicinal. ADMA is the industry association, and Chanduga is representing ADMA. Respected dignitaries on the dais and my friends. I am not a botanist. I am a manufacturer of medicines, and I understand that how the business is going on of the medicinal plants. Why industry prefers to purchase from the traders? Why industry is not going directly to the farmers? Number one. Secondly, whenever there is a problem of shortage of the raw material, the industry start running here and there towards the farmers who are cultivating what. I will give you some problems which industry is facing, farmers are facing, and for that I am going to suggest some few things which I do not know whether I am right or wrong. But if I am wrong, please correct me. Out of 9,800 approximately manufacturers in the country, almost all purchased is from traders. Please listen. Please listen carefully. Industry gets good on phone calls and or on mails. Industry do not go to any farmers now. Industry gets credit to the tune of minimum 3 months for the payment to the suppliers. The industry is in very small scale where it needs, if it needs 1 kg material, he gets from the traders, and even 100 tons also he can get from the traders. But of course, at the higher rate than the farmers. Our industry cannot give large stock because of the hampers of the financial status. Normally, grains, fruits, flowers are not sold by the farmers to directly to consumers. Industry gets any quantity from 1 kg to 1 ton within 24 hours. Rejected material taken back by traders. Industry gets any variety of species of plants at any time. Get samples for approval before transaction is finished. Coming back to the farmers, these are the issues of industry and the way they are performing the business. Few species are available with farmers. No farmers cultivates 3, 4, 5, 10 species of medicinal plants at a time in his farm. He is either he goes for only one, Sasagandha only, or Satavari only. And if manufacturers want a bundle of the medicinal plants, if he is to manufacture one product, nearly 10 plants, 25 to 60 plants are used in one medicine. If we have to take a batch of a product like Maharashtra or Mahasudarshan, 52 ingredients, and then how we go to each and one farmer. He doesn't know also that which farmer is cultivating what and where. So he cannot do that. That is why the first choice is the traders, where he gets all this material at a time in 24 hours from the traders. Large quantity of each species is not possible at any time from the farmers. Time of delivery is unpredictable from the farmers. Buyback arrangement is still not much popular except large quantity of buyers, especially extract manufacturers. They need large quantity of medicine plants. They purchase single plant in large quantity. But rate of the goods are less than the traders. Now, my last few suggestions will be that scattered locations of farmers is a problem for the retailers, manufacturers.
Limited buyer-seller interaction leads to mismatch of the demand. You cannot contact farmers at a time, anytime. There should be some written understanding MOU between industry and farmer through RCFC. Because practically it may not be possible due to the requirement of many species and variable quantity. Requirement from different parts of the country too. There are some plants are not available in Maharashtra. We have to straight away run to the Madhya Pradesh or Karnataka or Kerala also. Now, my suggestion, please listen. I may be wrong. I may be wrong. Please correct me. Of course, whatever I'm going to suggest is not simple, maybe very difficult also. I rely on RCFC. RCFC is the key to do this tough and difficult job of following activities. To set up a consortium of all farmers interested in medicinal plants cultivation and thereby generate data bank. Our RCFC director, Dr. Mokat, is in front of me, and I have told him also that if you don't have the data bank, then it is very difficult to get the material, and farmers also they don't know which industry is using what. Information of industry can be available from NMPV, madam. NMPV, which gets information about total consumption of each plant every year, which is supplied by the manufacturers too, as per the Drug and Cosmetic Act Rule 157A. So this information is really available. Now information from and data bank is to be kept ready by the RCFC. Over a period of time, like other markets, in the APMC market, grain market, vegetable market, flower market, formation of APMC type market is to be set up where farmers and traders can meet together at same place, which is very difficult. It is very difficult, very expensive also, provided the grant from the government is available. This is not easy initially, but over a period of time, we'll realize the benefit of this change. And my last suggestion is that we manufacture also rely on the RCFC, because RCFC is going to give the quality planting material to the farmers, and after that they also taste it for some contents wherever it is available. Then we are very safe in that case. So I am concluding this. Please suggest if I am wrong, or otherwise this is the correct way of linkage between the RCFC, farmers, industry. That is the best way I understand. Thank you very much. Thank you very much. मुझे लगता है कि सभी इंडस्ट्री को जो जिनको आपने छू लिया उनकी जो व्यथा है वो आपने सब बता दी है. तो हमें लगता है कि RCFC भी अश्योर यू कि हम करेंगे, डेटा बैंक बनाएंगे. एंड फ्रॉम द इंडस्ट्री वी रियली अपील, जो टीए शेड्यूल आपने कहा है वो टीए शेड्यूल डेटा टू बी अपलोडेड, क्योंकि 8,700 इंडस्ट्रीज है और हमारे पास 1500 इंडस्ट्री का टीए शेड्यूल आता है. अगर हर कोई करे तो कंजम्पशन का वैल्यू और वैल्यू का डेटा भी मिल जाएगा. एंड दैट रियली हेल्प फार्मर्स की कौन सी प्रजाति को हम लगाएंगे और कौन सी को नहीं लगाएंगे. हमारे समक्ष आज माननीय मंत्री जी भी है, तो ट्राइबल जो फॉरेस्ट में जो कलेक्शन है, क्योंकि आपने सही कहा कि फार्मर्स को एक एग्रो टेक्निक्स हो, उनको ज्ञान हो और उसका डेटा बैंक हो. 80% से भी ज्यादा कलेक्शन ट्राइबल से फॉरेस्ट से होता है, वो जो इसके हकदार है. तो हमारे वी आर रियली हैप्पी एंड वी आर ब्लेस्ड टुडे टू हैव मैडम विनीता श्रीवास्तव, एडवाइजर फ्रॉम द ट्राइबल मिनिस्ट्री. शी हैज जॉइंड ऑनलाइन. तो हमें ट्राइबल्स की भी क्या व्यथा है और उनको एक प्रशिक्षण कलेक्शन अगर हम अच्छा करें तो हम उनको भी हम हक दे सकते हैं, और इंडस्ट्री को भी रॉ मटेरियल अच्छे क्वालिटी का हम दे सकते हैं. और वो सीड एक्ट जो उससे है वो भी हम कैसे उसका ऑगमेंटेशन करें ये भी सोच सकते हैं. सो द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर provides training on scientific collection, harvesting and establishing primary processing facilities for the tribal forest gatherers of the medicinal herbs under Bandhan Yojana and Bandhan Vikas Kendra. And we are really happy कि Ministry of Ayush के तहत Medicinal Plant Board और ट्राइफेड का MOU हुआ है.
जिसमें जो ट्राइब्स जो आउटलेट है उसमें आप मेडिसिनल प्लांट भी देखते हैं, देयर इज अ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये ज्यादा से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या मैकेनिज्म है, हाउ वी रियली गिव मैक्सिमम शेयर टू द ट्राइब्स, और उनको प्रशिक्षण देके, अच्छी शिक्षा देके कलेक्शन का, हार्वेस्टिंग का, जीएपी, जीएफसीपी, गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस जो आनंद में डीएमई के साथ हमने बनाई है, तो उसका अगर प्रशिक्षण देने का भी सपोर्ट सिस्टम एनएफपीबी में है। सो मैडम, कैन यू प्लीज एलॉबरेट अस ऑन हाउ वी सपोर्ट द ट्राइबल्स फॉर द एमएसपीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट, and how we did it support the industry also in providing the raw material and linkages of the tribes to the industry. So Madam Vinita Srivastav, are you online? मैडम ज्वाइन हो गई है तो हम सुनना चाहते हैं। अगर मैडम ज्वाइन नहीं होते तो वी हैव बालकृष्ण महाराज जी हु इज आल्सो ज्वाइन ऑनलाइन। और कोविड पैंडेमिक से लेके न्यूट्रास्यूटिकल्स और बाकी मेडिसिनल प्लांट का रॉ मटेरियल, आपका म्यूजियम भी बहुत अच्छा है, एग्रो टेक्निक्स आपने डेवलप की है, और मेडिसिनल प्लांट को बढ़ावा देने के लिए आपके पास कुछ सॉल्यूशन है। What you mentioned over the phone that you have 1, 2, 3 important solutions which can resolve the problem of the industry as well as the collectors and the cultivators, and you have created a success model to your value chain. How do we really create a good value chain, supply chain management? Krishna Maharaj ji, we are really thankful to you. आप पेरिस में किसी और एक सेमिनार के लिए, वेबिनार के लिए आप आज फ्रांस में, पेरिस में, देयर इज अ टाइम लैग आल्सो। इन स्पाइट ऑफ दैट, योर पैशन, that is commitment is the one which you have joined us with us. So over to you, Krishna Maharaj. Thank you. मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस भारत भूमि से बाहर फिर भी मैं आप सबकी चिंता में अपनी चिंता जोड़ते हुए, क्योंकि हम चाहे कहीं भी रहें, हमारी चिंता हमारा देश है, हमारी प्रकृति है, हमारी प्रवृत्ति है, हमारी परंपरा है, हमारा संस्कार है। मैं आज इस आपकी सब विद्वज्जनों के वक्तव्य को सुन रहा था। सर्वप्रथम तो आज चीफ गेस्ट के रूप में आदरणीय हमारे माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी को मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूं यहाँ से, और आदरणीय डॉक्टर मुख्यपात्रा जी, और आदरणीय श्री लोकरंजन जी, आदरणीय प्रोफेसर तनुजा बहन जी, और आदरणीय दुष्यंत किशोर जी, आदरणीय विजय कुमार जी, आदरणीय कविता जादी जी, आदरणीय सुशांत सूद जी, आदरणीय दिलीप प्रजापति जी सहित सभी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, विद्वज्जन हैं, और इसको लेकर के जो आप चिंतन और चिंता कर रहे हैं, मैं आप सबको नमन करते हैं। दूर से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ी कनेक्टिविटी की भी थोड़ी सी परेशानी है, पर मैं आपको देख पा रहा हूँ, संभवतः आप हमको सुन पा रहे होंगे। तो मैं संक्षिप्त में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें, जब हम औषधि पौधों की बात करते हैं, तो हमको सर्वांगीण रूप से सोचना होगा कि हमारे देश के अंदर कितने ऐसे पौधे हैं जिनको औषधि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वह शास्त्रीय रूप में हो, चाहे वह परंपरा के रूप में हो। थोड़ी सी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ। टीएमसी के रूप में चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम वाले लगभग आज अपने औषधीय पौधों का 13,000 पौधों का उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कर चुके, और हम लोग हमारे शास्त्रों में लगभग 700 पौधों का वर्णन है। उनमें से यदि मैं बात करूं कि ट्रेडिशनल पौधों को मिला लिया जाए तो लगभग 400 पौधे और होते हैं, लगभग 1100 पौधों को हम औषधीय रूप में प्रयोग करते हैं। और उनमें से यदि आज आयुर्वेद के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या हम लोग बात करें, तो लगभग हम 300 साढ़े 300 पौधों का ही अधिकांशतः प्रयोग होता है। तो जो 350 पौधे हैं, उन पौधों को भी यदि हम व्यवस्थित रूप से काम करना शुरू कर दें, तो ये बहुत कठिन कार्य नहीं है। परंतु अभी जो मैं महसूस करता हूँ
जो हमें कठिनाइयां होगी हैं इस देश के अंदर, तो जैव संपदा है, जैव विविधता है, हमारी भारतवर्ष की यह शक्ति है, ताकत है। इसीलिए हमारे यहाँ जो दुनिया के अंदर जो प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी है, लगभग 3,60,000 के लगभग पौधे पाए जाते हैं। उनमें से हमने पूरे विश्व के वन पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को इस तरह से इकट्ठा करने का प्रयास किया कि कितने पौधे हैं जो औषधीय रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो ऐसे पौधों की संख्या लगभग हमने 60,000 से ज्यादा पौधों की लिस्ट बना करके वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया पतंजलि बना रहा है, जो लगभग 4 लाख से ज्यादा रेफरेंसेस हैं, जिसके अंदर 1800 से ज्यादा भाषाएं हैं। दुनिया के 2000 से ज्यादा जो ट्राइबल्स हैं उन सबको उससे हमने समावेश किया है। 15 वर्षों से हमारे 300 से ज्यादा वैज्ञानिक और एक्सपर्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो मैं अभी जो निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमने महसूस किया कि जो हमारे शास्त्रीय पौधे हैं, सर्वप्रथम तो क्योंकि नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड या बाकी जो भी हमको आदेश होगा, हम भी उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। जो मुझको लगता है कि हमें औषधीय पौधों की जो हमारे प्रॉपर उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है शुरा के रूप में, कहाँ पर कितने औषधीय पौधे उपलब्ध हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरा प्रॉपर ढंग से डॉक्यूमेंटेशन और उसकी पूरी फ्लोरा के ऊपर, और हम पूरा जो डेटा है उसको अच्छी तरह से हम हर्बेरियम सहित एक कलेक्शन का काम करें। यह प्रयास पतंजलि के द्वारा विगत कुछ वर्षों से किया भी जा रहा है। तो पहले हम लोग पूरे देश की उपलब्धता का यदि प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे तो कितना हमारे अंदर गैप है, कितनी अनुपलब्धता है। जैसे हमारे एक विद्वान बता रहे थे, मैं सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और दूसरी बात, जब औषधि पौधों की उपलब्धता पूरे देश के अंदर कहाँ पर कितनी मात्रा में है, पहला ये पता चले, तो दूसरा हमको ये पता करना जरूरी है कि जो एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि जो औषधीय गुण है अलग अलग जगह एक ही पौधा, यदि वो जैसे हल्दी की ही बात करो, कर्कुमिन जो है साउथ की हल्दी में अलग मात्रा में है, उत्तराखंड की हल्दी में अलग मात्रा में है, आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो सबसे ज्यादा वो एक्टिव जो कंपाउंड है वो अवेलेबल है। इसी तरह से हमने बहुत सारे पौधों का, एक ही औषधीय पौधे का, जैसे अश्वगंधा की बात बहुत होती है, तो अश्वगंधा की हो चाहे दूसरे पौधों की, हमने पूरे देश के अंदर से अलग अलग सैंपल्स उठा करके, अलग अलग टाइम पर उठा करके, उनके एक्टिव कंपाउंड को एनालिसिस कर करके बृहद स्तर पर डॉक्यूमेंटेशन करने का प्रयास किया है। जब तक उच्च गुणवत्ता युक्त औषधि की उपलब्धता नहीं होगी, तब तक हम कभी ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छी औषधि बना पाएंगे। तो हमारी जो फार्मेसियां हैं, बहुत सारे जो लोग फार्मेसियां हमारी छोटी छोटी फार्मेसियां हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं है, इतना वो लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो एक सामूहिक रूप में सरकार के स्तर पर यदि ऐसा प्रयास होता है कि इस कार्य को बहुत व्यापकता के साथ में और गंभीरता के साथ में बहुत जल्दी ही इस कार्य को किया जा सकता है। और दूसरी की बात, क्योंकि आदरणीय भूपेंद्र यादव साहब बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो वन क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है, जितने भी पौधों को उगाया जा सकता है, जैसे अभी अर्जुन की छाल की बात हो रही थी, एक अर्जुन का वृक्ष तैयार होने में 30-40 साल लग जाता है, 20 साल लग जाता है जो अच्छा पेड़ तैयार होने में, और छाल उतार करके खत्म करने में पेड़ को कुछ दिन भी नहीं लगता। क्या हम भारतवर्ष के अंदर जितने भी जो औषधीय वृक्ष हैं या औषधीय जो विधाएं हैं, उनका जो कल्टीवेशन वाली जो व्यवस्थाएं हैं, अभी भी इतनी जटिलता होती है। जब किसान जो उगाया, जैसे आप कह रहे थे कि ट्रेडर्स के साथ में जब हम जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए उत्सुक रहे थे, मैं अपनी मजबूरी निवेदन करना चाहता हूँ, किसान जब वो उगा करके हमारे पास लेकर के आना चाहता है, उसको इतनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, कई जड़ी बूटियों को लेकर के वह कर नहीं पाता है। और ट्रेडर किसान से उसी जड़ी बूटी को लेकर के जो फॉर्मेलिटीज है, पेपर वर्क पूरा करता है, और कई महंगे रेट में हमको खरीदने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि बिना दस्तावेजीकरण के, बिना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के हम उसको खरीद नहीं सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है यदि बेहतर हो जाता है, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे हमारे जितने भी जंगल जो पहाड़ वाले क्षेत्र हैं, चाहे हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, सिक्किम है या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, यहाँ सब जगह पर यदि उन जमीनों पर यदि वो किसी भी वृक्ष को लगाता है,
क्योंकि उनकी समृद्धि का साधन वो वृक्ष है, समृद्धि का साधन पेड़ पौधे हैं। यदि हम लगा करके ये वन विभाग से सुगमता के साथ में सबको देने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए हम ये व्यवस्था कर पाते हैं, तो हमको लगता है कि एक बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। इसी तरह से कृषिकरण और जड़ी बूटी प्रशिक्षण के लिए एक नेशनल लेवल का हमारा उपक्रम होना चाहिए, जो हम महसूस करते हैं, और थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होना चाहिए। जितने भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको एक अलग से, जैसे आज की जैसे जो भी कृषि की वाली जो हमारी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से होनी चाहिए, जिससे कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो प्रॉपर ट्रेनिंग की जगह पर हमको अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल मॉडल बना करके, क्योंकि जब हम खेतों को, किसानों को जो उगा रहे हैं उनको एक आदर्श मॉडल के रूप में हम सामने लाएंगे, तो किसानों को उत्साह और जड़ी बूटी उगाने के प्रति रुचि बनेगी। और इसके अतिरिक्त एक जो हम महसूस करते हैं कि पूरे देश के अंदर बात हो भी रही है कि ठीक है, नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड में बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारे किसान लोग हैं, परंतु उस डेटा को इस लेवल तक हम जियो फेंसिंग करें, जियो टैगिंग करें और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उनका जो लैंड होल्डिंग के साथ में, उनका खसरा और सर्टिफिकेट के साथ में एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना करके पूरे मेडिसिनल प्लान सिस्टम को ई गवर्नेंस के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पे ला करके वो इतना विजिबल हो सकती है, जो बेचने वाला है, खरीदने वाला है, सेलर वाइट इतनी कंफर्ट लेवल पर आ जाए। किसान चाहता है कि मुझे फिक्स प्राइस पर बेचना है या मुझे ऑप्शन पर बेचना है, वो सारे ऑप्शन से भी इजीली अवेलेबल हो। इससे जो बीच के बिचौलिए हैं या दूसरे जो लोग हैं, तो कमीशन के ज्यादा जो लाभ जिनको मिल रहा है उन लोगों को हम हतोत्साहित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो जड़ी प्रमाणीकरण की व्यवस्था है, क्योंकि ऑर्गेनिक के ऊपर हमने देखा है महाराष्ट्र आदि कई जगहों पर किसान लोग जड़ी बूटी उगाते हैं, पर वहां पर वो लोग यूरिया वगैरह भी डाल देते हैं। हमारे को जड़ी बूटी कृषिकरण के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की ऐसी ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अभी जैविक कृषिकरण की यदि हम बात करें, जैविक सर्टिफिकेट लेना इजी है, परंतु वह किसी भी तरह से अजैविक द्रव्यों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसको मापना बहुत कठिन है। हम जानते हैं कि बहुत सारी जगह पर जैविक सर्टिफिकेशन होते हुए भी वह अजैविक जो प्रैक्टिस जड़ी बूटियों के ऊपर हो रहा है, उसकी वजह से इसकी गुणवत्ता में बहुत कमी आ रही है। तो ये कुछ बिंदु थे, इन चीजों के ऊपर गहन चिंतन होकर के यदि हम समाधान के स्तर पर ले जाते हैं, तो न केवल जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ट्रेडिशनल प्लांट मेडिसिन के रूप में पूरी दुनिया के अंदर चाहे रॉ मटेरियल, आज हमें पता नहीं कष्ट होता है कि हमको चाइना से रॉ मटेरियल मंगाना पड़ता है, हमको पाकिस्तान से मंगाना पड़ता है, हमको बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है। वो स्थिति हम देश के अंदर समाप्त कर सकते हैं। तो जो किसानों को उत्साहित करने वाली, उनको प्रोत्साहन मिलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, समवेत रूप में एक जगह पर यदि हम व्यवस्थित रूप से कर पाए, तो हमको लगता है कि जड़ी बूटियों का प्रयोग भी बढ़ेगा। अब जानते हैं कोरोना के टाइम पर जितना भी हम लोगों ने भी एक विनम्र प्रयास किया, आज भारतवर्ष की औषधियों के संदर्भ में मैं पेरिस में यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ के लोगों ने भी जड़ी बूटियों की, आयुर्वेद की अब चर्चा करने लगे। दुनिया के अंदर लोगों को आयुर्वेद शब्द का भी पता नहीं था, उसका अर्थ क्या है, अब वो आयुर्वेद को जानने लगे। हम लोग मानते थे कि जो हर्बल मेडिसिन यूज करने वाले लोग वो आयुर्वेद वाले ही हैं, ऐसा हम प्रायः मानते थे, परंतु जैसा आयुर्वेद है उसी तरह से 70 से ज्यादा जड़ी बूटी आश्रित बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम पूरी दुनिया में है। तो हम उन पद्धतियों में आयुर्वेद को अग्रणी बना सके, आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सके, तो इसके लिए जो आप लोगों का प्रयास है, जहां तक रही पतंजलि की बात, पतंजलि सर्वथा सर्वत्मना आप राष्ट्र हित के लिए, किसानों के हित के लिए, आयुर्वेद के उत्थान के लिए आप जो आदेश करेंगे, कमर्शियल एंगल से नहीं, सेवा की भावना से, किसानों को जीवन में, किसानों की जीवन में खुशहाली लाने की भावना से, और जो डिजिटल एग्रीकल्चर के साथ ही जो डॉक्यूमेंटेशन, डेटा एनालिसिस से लेकर के केमिकल एनालिसिस तक का काम हम करने में सक्षम हैं, तो वो सब हम करने को तैयार हैं। तो जो आप लोगों को बीच में निर्णय होता है आप बता देंगे, तो हम उसको करने के लिए सक्षम हैं। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं स्थूल रूप में आप सबके बीच में उपस्थित नहीं पाया, पुनरअपि आप सबके प्यार में हम जितने दूर से भी आज हम जुड़ पाए हैं, इतना कहता हुआ, और इसकी जो मिनट्स बनेंगे उसको भी मैं पढ़ूंगा, और जो हमारे लायक होगा आप बताएंगे, इतना कहता हुआ मैं विनम्रता पूर्वक क्षमा सहित
अभी विदा चाहूंगा। आप सबको मेरा प्रणाम। ओम वंदन। ने बहुत ही बिल्कुल अचूक ऐसे जो इश्यूज है और सॉल्यूशन बताए, डेटा मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस की बात करी तो हमारा ई चरक है, ऐसे ही कई प्लेटफॉर्म हम बना के डॉक्यूमेंटेशन जो नेशनल मेडिसिनल प्लान में बोर्ड में जो अनुदान देते हुए भारत के कई फॉरेस्ट इलाकों में जो एमपीसीएस बनाए हैं, मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया, उसका सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन का एक प्रोजेक्ट हाल ही में मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने दिया है। तो मुझे लगता है ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट है जो हम डॉक्यूमेंटेशन करके और हमारे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के साथ भी लगातार संपर्क करके हम उसको आगे बढ़ाएंगे। Now, just coming from the forest, yes. We have covered the cultivation aspect in the participant also. Also about the farmers here. So just continuing the discussion. The next question I would like to ask from Dr. Sityanju Kumar, Director Medicinal Plant Research, is the present is serving, and he has a vast experience and associated with the Ministry of Agriculture, Farmers Welfare. For successful production of quality planting material, I'm covering all the aspects in herbal sector. Quality planting materials, cultivation, post-harvest management, marketing, a network of robust mechanisms is required, both at central and state level. And Ministry of Agriculture has existing infrastructure and technical expertise. Besides institutions set up like Directorate of Medicinal and Aromatic Plants Research, Anand Gujarat, CFED for marketing and top, Central Institute of Post-Harvest Engineering and Technology, Ludhiana, and NAFED, National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India, for marketing Department of Marketing Inspection, and also the farmers, small farmers activities consortium, along with a network of APMC mandis and support of state agriculture universities and basic Vigyan team. So in the entire, you can see the starting from cultivation to marketing, all aspects are dealt in different crops, especially in horticulture crop also by Ministry of Agriculture and Farm Welfare. So in this respect, NMPV, if you talk of cultivation, we have supported 56,000 area under cultivation as a subsidy in last 5 years. So now we request Dr. Sityanju Kumar ji to address that how to fulfill the huge supply gap to the growing industry demand, as it has been told by many industries, and availability of infrastructure facilities at existing APMC mandis for marketing of medicinal plants. Sir, please. केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय मंत्री गुजरात सरकार, and distinguished panelists and dear delegates. I represent Indian Council of Agricultural Research, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गुजरात में आनंद जिले में एक राष्ट्रीय संस्थान बनाया गया है जिसका नाम डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट रिसर्च है। और इससे पहले भी आईसीआर में एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है 70 के दशक से ही, जिसका नाम है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो आईसीआर, डीएमएपीआर आनंद और एआईसीआरपी ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के द्वारा लगभग 50 मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स पर जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के होल एस्पेक्ट है, from conservation and development of the agrotechnics, good agricultural practices, as well as the varietal development program, उसमें काम हो रहा है। और जो हमारे AICRP मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट के सेंटर्स हैं वो इंडिया में 26 हैं और ऑलमोस्ट ऑल एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में स्थित है, क्योंकि जो लोकेशन स्पेसिफिक एग्रोटेक्निक्स और पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट डेवलप करना है, वो पर्टिकुलर एक हमारे जो AICRP सेंटर और जो कि कश्मीर से लेकर के पासीघाट और त्रिशूर और जोरहट इन सब जगहों में स्थित है, उन जगहों पर काम हो रहा है। तो जहाँ तक सस्टेनेबल क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल और मटेरियल अवेलेबिलिटी की बात है, तो जैसा कि पहले से बताया गया है कि अबाउट 85% रॉ मटेरियल अभी तक हमारा फॉरेस्ट से ही आ रहा है
but to make the supply more sustainable, as well as make the uniformity in quality. Because medicinal plant में एक जो सबसे बड़ी important चीज है, that is the presence of the bioactive component. And because of the bioactive components, it has the medicinal efficacy. तो उसमें क्या होता है कि यदि आप डिफरेंट लोकेशन से कलेक्ट करते हैं तो इनवेरिएबली देयर विल बी वेरिएशन इन द कंटेंट ऑफ द बायोएक्टिव कंपोनेंट एंड दैट विल लीड टू द variation in the efficacy. To meet out that requirement, the development of the proper agro techniques is must, and our ICR Institute and EICRP is already working in that direction very vigorously. And in addition to that, what is the most important thing that in addition to the ग्रेटर डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें उन स्पेसीज पर ज्यादा ध्यान रखना है तो ग्रेजुअली आरईडी की कैटेगरी में आ जा रहे हैं आरईडी आई मीन रेयर इंडेंजर्ड थ्रेटेड पर्टिकुलरली 2-3 स्पेसीज मैं बताना चाहूंगा कि जो ऑलरेडी आरईडी के कैटेगरी में आ गए हैं जैसे चिरायता है कुटकी है ये सब ऑलरेडी आरईडी की कैटेगरी में आ गए हैं और इनका सफिशिएंट जो मटेरियल है इसका मिलने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि इनके लिए प्रॉपर एग्रो टेक्निक्स और उनका मल्टीप्लिकेशन या कंजर्वेशन के डायरेक्शन में जितना काम होना चाहिए वो काम अभी भी थोड़ा होना और बाकी है। इसके साथ ही साथ जो यूनिफॉर्मिटी इन क्वालिटी की बात है तो उसमें एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज फाइन. In addition to that, we also have to concentrate more vigorously on the development of the research related to the chemotypic breeding. Chemotypic breeding का मतलब ये है कि जो भी आपके ये मेडिसिनल प्लांट जो आप जिनकी कल्टीवेशन कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट फॉर ईच एंड एवरी मेडिसिनल प्लांट जो बायोएक्टिव कंपाउंड है वो डिफाइंड है या उसको हम लोग कहते हैं कि मार्कर फिक्स्ड है तो उसका कंटेंट को कैसे बढ़ाया जाए तो उस डायरेक्शन में भी काम करने की आवश्यकता है और उसमें यदि हमें सफलता मिल जाती है तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा ये स्ट्रेंथ हो जाएगा कि हम ग्रेजुअली जो है यूनिफॉर्म क्वालिटी के मटेरियल ओवर द पीरियड सप्लाई कर पाएंगे. इसके अलावा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई और मटेरियल रॉ मटेरियल सप्लाई के अलावा जो एपीएमसी मंडी में की बात है तो वहां पर क्या होता है कि जो मेडिसिनल प्लांट है आप सभी जानते हैं मेडिसिनल प्लांट का जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है प्राइमरी प्रोसेसिंग का के बाद जो है वो उसको स्टोरेज में रखा जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी नीड उसको सेल करने से पहले. तो मंडी में क्या होता है कि जो क्वालिटी बेस्ड कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि क्या किस तरह से उसका फार्मर्स को रेट दिया जाए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है. तो इस डायरेक्शन में हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि यदि जो बहुत सारी मंडियों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किए गए हैं कि कुछ रैपिड टेक्निक अभी आ गई है जैसे स्ट्रिप बेस्ड टेक्निक पहले हुआ करता था तो कुछ ऐसे रैपिड बेस्ड टेक्निक आ गई है कि जिसको आपको तुरंत आपको जो भी रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा और उसमें कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो बहुत रैपिड बेस्ड टेक्निक होती है. तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मार्केट में कभी कभी देखा जाता है कि जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स होता है जो मार्कर होते हैं तो उसकी जो मात्रा होती है क्वांटिटी होती है तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है लैब टू लैब और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. यदि आप उसको एनालिसिस करेंगे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है. तो इस वेरिएशन के पीछे का मूल कारण क्या है कि जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है या इंडस्ट्री है या ट्रेडर है दे यूज डिफरेंट मेथोडोलॉजी फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द मार्कर कंपाउंड और बायोएक्टिव कंपाउंड. तो एक कोई इस तरह के नेशनल गाइडलाइंस बनाया जाए कि यदि यूनिफॉर्म मेथोडोलॉजी
जो यदि यूज किया जाए तो इस तरह के जो वेरिएशंस होते हैं, इस तरह के वेरिएशंस को अवॉइड किया जा सकता है और एग्जैक्टली हमें पता चल सकता है कि अक्रॉस द लोकेशन की जो वेरिएशन है क्वालिटी का वो क्या है और हमारे पास में जो वेरिएबिलिटी है वो कितना है, कितना ज्यादा है बायोएक्टिव कंपोनेंट में हम यदि डिफरेंट लोकेशन में ग्रो करते हैं तो कितना वेरिएशन हमारे पास में आता है। तो इन्हीं सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और हमारा ICAR के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई का या जो प्लांटिंग मटेरियल के लिए हमें असाइन किया जाएगा, we will try our best to make that task accomplished. And before I stop my words, I would like to NMP thank you very much NMP for giving me an opportunity. Thank you, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। ICAR जो एग्रीकल्चर रिसर्च है उसका इसकी भूमिका और इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपने क्वालिटी जो रैपिड टेस्टिंग की बात करी वो शायद NMPB के लिए और सभी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस होगा। हमें 4:30 से पहले ये खत्म कंक्लूड करना है, हमारे पास समय की मर्यादा है। सभी लोग यहाँ जो आए हैं वो माननीय मंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए आए, सेक्रेटरी डोनर है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं सभी एस्टीम पैनलिस्ट को निवेदन करूंगी अगर ब्रीफ में अगर आप हमने की गए और maybe we will have a focus group discussion in future also with each and every stakeholders। लेकिन सब लोग ये जानने के लिए उत्सुक है, यहाँ इंडस्ट्री बॉडीज है, सभी हमें लीडर्स हमें इंडस्ट्री के यहाँ दिख रहे हैं। तो इंडस्ट्री को 85% रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आता है। माननीय मंत्री जी भी है, बट वी हैव सीन विवास रंजन जी ADG फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को भी देखते हैं। तो जो कल्टीवेशन का जो लोड, तो जो माननीय मंत्री जी ने भी कहा कल्टीवेशन ज्यादा से ज्यादा करें हम रॉ मटेरियल का, लेकिन फॉरेस्ट में ही रिसोर्स मैनेजमेंट जो सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ द फ्यूचर ये कैसे कर सकता है, व्हाट कैन बी द मैकेनिज्म ऑफ द रॉ मटेरियल को जाए एंड द फ्यूचर जनरेशंस आल्सो विल रिसीव द सेम सप्लाई। क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई चेन भी सस्टेनेबिलिटी भी हो, डिमांड भी मीट करे, एट द सेम टाइम फॉरेस्ट को भी हम बचा के रखें। सो व्हाट कुड बी द मैकेनिज्म, दीज आर द टू बिग इश्यूज। Maybe we would like to know from Sri Vivas Ranjan ji, ADG Forest now. थैंक यू। आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार नई दिल्ली, मंच पर आसीन सभी हमारे सम्मानित सदस्यगण, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें उठाए गए हैं कि सस्टेनेबिलिटी कैसे होगा। हम अपनी शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स से। WHO ने कहा था 2100 स्पीसीज है मेडिसिनल प्लांट का जो मेडिसिन में इस्तेमाल होता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और इंडिया में 150 स्पीसीज हैं जो ऑल मेडिसिनल प्लांट बनाने में या मेडिसिन के एक्सट्रैक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। 2002 की एक पुराने स्टडी है जिसमें कहते हैं 48 स्पीसीज को हम जो इंडिजिनस है उसका इस्तेमाल करते हैं और 42 स्पीसीज को जो इंपोर्ट होता है उससे हम मेडिसिन बनाते हैं। ये मोटे मोटे हम स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। इसका मतलब है कि ओरिजिनली जब NMPB का क्रिएशन किया गया था तो ये बातें ध्यान में रखी गई थी कि फॉरेस्ट से निकलते निकलते हमारा स्पीसीज जो भी निकला मेडिसिनल प्लांट्स के लिए वो ग्रेजुअली इंडेंजर्ड होता रहा, और आज की डेट में हमारे पास बेंचमार्क सर्वे नहीं होने के कारण कि कौन सी प्रजातियां कितनी है, कितनी उसको निकलनी चाहिए जंगल से और क्या स्थिति हमारी हो गई है, इसको इनकाउंटर करने के लिए कल्टीवेशन को बढ़ावा देने की बात हुई। और ये कहा गया था कि हम इसको 2 पार्ट में लेंगे, एक्सिटू कॉन्जर्वेशन करेंगे, इन सिटू कॉन्जर्वेशन करेंगे। जो फॉरेस्ट एरिया के मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसको हम कंजर्व करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट एंड ट्रेडेड कम्युनिटी है, प्रायोरिटी पहले 32 स्पीसीज की बनाई गई थी, वो 32 स्पीसीज का एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन होगा। शुरुआत में NMPB का ऑब्जेक्टिव ये था। उस 32 स्पीसीज का कल्टीवेशन टेक्निक भी एस्टैब्लिश किया गया, काफी प्रमोट भी किया, बट ग्रेजुअली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम
इस इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हुआ और नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ते चले गए। हमारे मित्र ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा रेज किया कि हमको फॉरेस्ट के रूल्स रेगुलेशंस को शिथिल करना चाहिए। इस पर मैं कहना चाहूंगा, एक जिस स्पीसीज जो ससोरिया लापा का आपने नाम लिया था, इस स्पीसीज का कल्टीवेशन प्रमोट करने के लिए हिमाचल गवर्नमेंट को प्रमोट किया गया और मिनिस्ट्री से परमिशन जारी की। इसका मतलब वो स्पीसीज जो थ्रेटेंड स्पीसीज है, जो आरईटी स्पीसीज है, जो रेयर इंडेंजर्ड थ्रेटेंड है, उसको हम कल्टीवेशन से ही बचा सकते हैं। और अब रिसर्च एस्टैब्लिश कर दिया है, हमारी केएफआरए ने एस्टैब्लिश किया 2020 में से, कि वाइल्ड और कल्टीवेटिव दोनों में पहले माना जाता था कि वाइल्ड में अल्कलॉइड्स ज्यादा अच्छे होते हैं, कल्टीवेटेड में नहीं होते हैं। इसको गलत कर दिया। इसका मतलब है कि कल्टीवेटेड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर हम रेगुलेटेड कंडीशंस में उसको कल्टीवेट करें। नेचुरली जो वाइल्ड में पाया जाता है वो हैबिटेट स्पेसिफिक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है, एक पर्टिकुलर रेंज में होता है, उसका पॉपुलेशन साइज है, स्पीसीज डाइवर्सिटी वहीं पाई जाती है, उसकी कोई टेक्निक हमें पता नहीं। कुछ स्पीसीज की नर्सरी टेक्निक हमें पता है। इसका मतलब है जेनेटिकली या टिश्यू कल्चर के माध्यम से उसका प्रोपगेशन कल्टीवेशन को बढ़ावा दे सकती है। तो नटशेल में ये कहा जाए कि हम ऐसे स्पीसीज जो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है और ट्रेडेड वैल्यू रखते हुए, इनका जंगल के अंदर कंजर्वेशन किया जाए, प्रमोट किया जाए, और इसके बाहर कल्टीवेशन को बिल्कुल लार्ज स्केल्स पे प्रमोट किया जाए। और आपने अभी अमृत महोत्सव में अपना एक टारगेट भी रखा है कि 75,000 हेक्टेयर आप मेडिसिनल प्लांट का एरिया बढ़ाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि उन क्षेत्रों में भी आपको इस तरह की नर्सरीज को जो इम्पोर्टेंट ट्रेडेड वैल्यूज का है उसकी जानकारी देंगे। दूसरा एक और बात आई थी, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि आपको किस स्पीसीज की कितनी क्वांटिटी कब चाहिए। हम लोग खुद एक बार एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में गया था सर, और हमने पूछा कि आप बेल का आंवला बनाते हैं, बेल का मुरब्बा बनाते हैं, आपको कितना बेल चाहिए? उन्होंने कहा ये हम आपसे नहीं बताएंगे। जबकि हमारे पास हमारे जंगलों में बेल की क्वांटिटी जो उपलब्धता है बहुत है, हम दे सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं दी गई। एक दूसरा बताते हैं एग्जाम्पल, नमामि गंगे योजना के तहत उत्तर प्रदेश में गंगा डिस्ट्रिक्ट्स में जो 27 डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें से कुछ जनपदों में वेटिवर क्लास को प्रोड्यूस करने के लिए लाई सरकार ने। हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 100 टन की है, हम प्रोड्यूस अभी 20 टन कर रहे हैं। अब उस किसान से कैसे लिंकेजेस स्टैब्लिश करे ट्रेडर या इंडस्ट्री, लैग करता है, जबकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, समय केवल 3 महीने लगते हैं, फिर भी हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास लैक ऑफ इंटरेस्ट है या डेफिशिएट हमारे पास लिंकेजेस हम स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोवर्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रीज। एक बात आई थी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की, बिल्कुल सही है कि मेडिसिनल प्लांट का सीड क्लोन हमारे पास नहीं है। हमारी रिसर्च के अनुसार अभी तक हमने, मंत्रालय ने आईसीएफआरए में 67 प्रजातियों का क्लोनल प्रोपगेशन स्टैब्लिश किया है, लेकिन ये सारी ट्री वैरायटी। इसका मतलब है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम अभी भी बहुत होना इसमें बाकी है, और इसमें इंडस्ट्री जरूर सामने आए कि जो उनको स्पीसीज चाहिए उसका टिश्यू प्रोपगेशन, उसका माइक्रो प्रोपगेशन कैसे हो, इसमें इंडस्ट्रीज को सामने आना चाहिए। चौथा, एक और बात रखी गई सर्टिफिकेशन। बिल्कुल सर, आज के डेट में इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको कम्पीट करना है तो बिना सर्टिफाइड स्वीट सोर्स के आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डब्ल्यूटीओ प्रोविजंस आते हैं। हम अपने टिम्बर प्रोडक्ट्स को, जो फर्नीचर हम बनाते हैं, वो हम बाहर नहीं बेच पाते हैं अगर वो सर्टिफाइड टिम्बर सोर्स से नहीं आता है। पूरे कंट्री में केवल उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने अपने फॉरेस्ट एरिया को सर्टिफाई किया। तो बिना सर्टिफाइड सीड सोर्स के, बिना सर्टिफाइड प्लांटिंग स्टॉक्स के हम अपने प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग, वैल्यूएबल ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये बहुत एक महत्वपूर्ण है। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है, जैसे अभी इंडस्ट्रीज के लोगों ने भी कहा
कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल एंड इट्स सर्टिफिकेशन ये बहुत मैंडेटरी है। क्या देखते हैं, छोटे छोटे चीजें देखते हैं। आपने अपना सीड का सोर्स क्या है, उस सीड के सोर्स में हमने कोई चीज कंटामिनेट तो नहीं किया, हमने कोई पेस्टिसाइड का यूज तो नहीं किया, हमने उसको कहीं मैक्सिमम हार्वेस्टिंग तो नहीं कर लिया। बट शुरू में लगता है कि पता नहीं उसमें बहुत ज्यादा इनपुट हमको देना पड़ेगा, इसलिए हमको दिक्कत है। सर हम इसमें अपडेट करना चाहते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री एरिया में हम लोगों ने सर्टिफिकेशन के लिए अपनी संस्था को ऑलरेडी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, और उसके माध्यम से ICFR की हमारे 11 इंस्टीट्यूट है पूरी कंट्री में, उन सब को हो सकता है आने वाले हम 6 महीने 1 साल के अंदर सर्टिफाइड एजेंसी बना पाए। इंडस्ट्रीज ने कोई प्रश्न नहीं किया, अच्छा लगा, क्योंकि इंडस्ट्री अपने जो बॉटलनेक्स है उनको हाईलाइट कर रहे थे। अभी भी हम एक बार दोबारा रिपीट करेंगे कि हमको स्टैटिस्टिक्स चाहिए कि आपको किस प्रजाति का फ्लावर चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, बार्क चाहिए, स्टेम चाहिए। वो क्वांटिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। उदाहरण दिया बालकृष्ण जी ने, उन्होंने कहा अर्जुन के छाल हमको नहीं मिलते हैं। नेचुरली अर्जुन के छाल नहीं मिलेंगे, अगर किसी का डिबार्किंग कर देंगे तो वो ट्री सूख जाएगा। इसका मतलब है कि जहां हम अर्जुन के पेड़ों की फेलिंग करते हैं, हम वहां से उनको अर्जुन की छाल सप्लाई कर सकते हैं। ये कोरिलेट हो सकता है प्रोवाइडेड होल डिमांड्स कम टू अस थ्रू NMB। यही मुझे कहना है। थैंक यू। टीए शेड्यूल, अपडेटेड टीए शेड्यूल इज द वे अहेड। ये आपने बहुत अच्छा हमें बताया। फॉरेस्ट से लेके ही हमारे इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी है। सौरभ कुछ पूछना चाहते हैं? सौरभ जी आप। Safety and quality parameters gets preference over untagged raw material. We have with us Dr. Jailen Shastri ji. Sir has a vast experience from the industry as well as from the government side. And sir, we would request you, what's your take on raw material issues and how traceability of medicinal plants as chain of custody of the raw material is imperative to माननीय improve. मंत्री जी दोबारा ज्वाइन हो रहे हैं। I'll repeat my question. So, what's your take on raw material, certified raw material, and issue of traceability of medicinal plants? As we understand that chain of custody of the raw material is imperative to improve the overall quality of formulations and the future sustainability of the raw material as well. So, Thank you. First of all, I convey my respects to both the ministers, honorable ministers present on this dais, and all of the panelists. First of all, I would like to mention, I would like to correct that there is no illegality on any of the raw material since it is licensed. So there is no illegality at the product level, and there is no illegality at the what we call raw material level as per the law of the land, since some TP is given. How is given? Let's not talk about the mechanism. I am receiving from my farm gate to farm gate through a process which is legal. So let us try to put this in right perspective. It is an unorganized segment in legal terminology. So we are living in an unorganized world. We are not living in an illegal world. So there are several impediments for the industry, and there are some practical problems, and that we can discuss later. I would like to, first of all, change two myths which are prevailing by and large. And till last year, I was there at NMBB when I realized, it's an eye-opener for me about my 1.5 year tenure. The statement that 80% of the raw material is coming from the wild is unrealistic when you speak about the volumes. If you are talking about number of species, your statement is correct. If you are talking about the volumes, your statement is incorrect. Out of 100 top species, 58 species, starting from Ashwagandha, your Isabgol, your Shatavari, your Giloy, your Tulsi, your Haldi, okay, all are being cultivated and they have become cash crops. Everything is available. If we close our eyes, then it is a real tough time for all of us. Let us put the
the positive points of this country, as our Honorable Prime Minister always mentions. Take the positives to the world and correct the negatives within our these kind of roundtables or plenaries. So therefore, I'm vociferously trying to mention this. And there is another myth which is prevailing that National Plant Board could cultivate about 2.52 lakh hectares in 18 and a half years. Again, it's incorrect. It is the amount of what you call area, volume of area, which was subsidized by NMPB. If you really look at the training programs given, each training program has more than 50 to 100 farmers. And when I enumerated, the area totally cultivated through these farmers in the last 21 years is more than 20 lakh hectares. Only you're talking about 2.5 lakh hectares of the subsidy given. These two are different entities. So I'm trying to put the right perspective. Now, the question is, who is certifying this? July 2021, there is a notification from Minister of Ayush, where it's categorically mentioned since the TF form is being submitted by the industry to the National Medicinal Plant Board, the certificate of cultivation will be issued by the NMPB, SMPB, the officers designated by this NMPB or Ministry of Ayush. So the process is on for this certification of the raw material, which is the source. Why I'm giving all these details? We will be talking about the concept on seed to shelf. The seed need to be certified, and KFRA, fortunately, I could see Chakoji here. The team at KFRA, about 42 species seed bank is there. And with NBPGR Delhi, we have more than 120 medicinal plant germplasm bank. I personally visited. So roughly your top 150 species germplasm has been documented. So let us extend the cooperation to the next level, that is to just certify. So let us go to these organizations and ask them to certify the your so-called germplasm, your QPM, whatever you want to call it. So this is simple. Only I am giving the solutions. We can enumerate problems for next decade, but it will not give 1 rupee extra income for this nation. Now coming to the raw material certification, my previous colleague friend Manish Pandeyji here, we have completed successfully 17 languages and versions of your voluntary certification program. I was requesting, this is a huge voluminous what you call document, which no farmer in this country can use. It is not user-friendly format. It is an industry-friendly format. So we should reduce this format to 2 to 4 pages, where an uneducated farmer can fill it up and can use it. Then only it will be useful. The 17 languages may not be useful. This will be an academic exercise which will help in a PhD or postdoc program, but not to a farmer who is illiterate. Let us reduce this. Our test are bangan, or adrak, or mirchi, or dhania, or jeera, or methi in our kitchen, which we are using every Sorry day. to interrupt you. Actually, somebody behind this, we are very time. So Yeah. please continue. Yeah, 2 minutes. So this certification is required as a fit for purpose. What is that fit for purpose? Test your ash value, water soluble, moisture, water soluble extractive value, alcohol soluble extractive value, and simple 4 to 5 spots on TLC over. With this certification, you will be in a position to complete, and you can complete it in a field and a mobile lab, where the concept is already prevailing with FSSA and all. There are modalities. You can reach out to all the CMAP institutes or CSR, DBT, DST, and NIST organizations. They are there and very much aware of this. The only connectivity will come from getting associated with people, the real stakeholders who are there on the ground, the JFMCs or the SHGs,
or your NGOs who are associated. Hardly we could trace 23 serious NGOs who are really working and contributing for medicinal plants. It may be surprising. We searched the entire NGO network, we searched that one portal, and we could shortlist 23 at that last year. And maybe to start with, this 23 is a good number covering the entire nation. Why don't we start getting the data from them? It may be guesstimate or estimate or a guess. Why don't we start somewhere? And about 20 lakh metric tons of bioresources being used today. And if you look at the cultivation, it is about 16, 17 lakh metric tons. And the spice board, which is using 58 species, all the spices. And even if you take 2020-21 data, about 101 lakh metric tons, which is being used by India, 25% if it is being used by Indian Ayush industry, 25 lakh metric tons of spices we are using. This data is available. Let us put it in perspective with the estimate. I think this is not impossible. Let us look at the brighter end and positive end than dropping our shoulders for no good reason. That's all what I wanted to convey. I thank Madam Tanuja Nesarji and the entire team for giving me an opportunity. Thank you very much. Because your inputs definitely will be taken care. And industry, pro industry, and also it would be very, very important, the suggestions. I think in the similar line, we have the representation from APEDA UK Virtue. Maybe you can also in continuation, so that we can definitely, we have then Kumarji and quickly, if you can throw light, Virtue. Sir, I would like to, we are having US VC General Manager APEDA. Sir, with respect to certification, I would like to say, recently NMDB has launched one scheme, voluntary certification scheme for medicinal produce. And this scheme is for certifying the source and the quality, and with respect to the good agricultural practices and collection practices. And we are also having Director Quality Council of India, Manish Daji here, Manish Pandey here. Sir, with respect to that, we would like to integrate this scheme for our certified medicine produce to the organic certification, sir. So, sir, please, sir. Whether we can integrate for organic certification, this is very difficult to answer right now, but I would say that integration of all means starting from farmer FPOs to exporters to importers with intervention of lab. That is very important. As far as export is concerned, we have seen the success in case of grapes, where farmer knows to whom he is selling, exporter knows from whom he is taking, and lab knows what sample they have checked. They keep the sample for long so that the importer, whenever some dispute is there, they give that report of that sample. Plus, importer knows the whole chain. This is very important. So, whatever difficulties the medicinal plant will be facing, but this is the right way to go ahead. The grapes example is a very particular example for, say, Nasik area, where a lot of grapes are grown. So this is integration is very much possible. But Apida and other products like turmeric was referred. We do the capacity building of FPO, FPC. We do the DSMs to integrate the backward and forward integration. Then we conduct the international buyer seller. So this is the way we go ahead for export promotion. So this is what I want to say. That's all. Thank you very much. This giving it was very crisp, and you have given touched the point also. Now we have Vinita Srivastava, advisor health. I think we could not join earlier. Maybe you can, if she's there, we can, okay. Then our mentor, we have Jitendra Sharma ji, who is heading many committees, still mentoring us. So your comments, sir, then we will definitely like to conclude by our secretary donor. Thank you, madam. I would like to share a few actionable points. They especially pertain to
our parent ministry, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So we have our colleague Ranjan ji here, and through him, we'd like to convey this to Honorable Minister Saab. There are some structural changes that are required to be made for making the whole ecosystem more congenial and more transparent. So the actionable points that I would like to place before you, a small amendment in the Wildlife Act on the lines of the provision in the Wildlife Act to collect snake poison for antidotes, that kind of an amendment to allow on based on carrying capacity, say from the zoos in the country, on horns of certain deer species, some common coral species, which Ayurveda needs to prepare very important medicines. Especially they are used for children who face acute lung spasms due to allergies. So today also these medicines are being made, but the raw material collection is not legal. So a kind consideration of this small amendment in the Wildlife Act will go a long way in legalizing the supply chain and also making it more transparent. The second suggestion is on transit rules under the Indian Forest Act. We would urge upon the ministry to do a small amendment in the Indian Forest Act so that for the purpose of issuing national permits or for the purpose of cultivated crops, maybe the rules can be put in place where a national portal can be developed, wherein any farmer who cultivates a rare, endangered, threatened, or otherwise forest species, for that matter, bamboo or whatever he cultivates, that should be registered on that particular portal. And there should be a certain period that the state governments can have to kind of verify if they have any doubt. But once the produce is ready to harvest, then there should be no discretion with the implementation agencies in the states to harass the producers or stop the trucks. We have done an amendment in respect of bamboo for keeping in view the Northeast. But even now, there is a discretion. If I, as a forest officer, want to harass someone, even if his material is cultivated, I can stop his truck on the basis of suspicion. So a portal on the state level or the national level should be mandated under the law. Things will become very, very transparent. As we are moving ahead in this sector, we need fingerprinting of the supply chain. And that traceability and fingerprinting of the supply chain would only come if we take these radical but small measures to bring on one platform every information in this age of technology, in this age of drones. I think we have to get rid of archaic provisions and mindsets of saying that on presumption, I would say that this is theft from the forest, and therefore I need to kind of interfere, and that kind of thing should go away. Biodiversity Act, as we all know, has been a major impediment, but we want to thank the Ministry of Environment and Forest that a process has been set in motion. It is already before the parliamentary subcommittee. So amendments in the Biodiversity Act will go a long way. Sir, the way the Biodiversity Act was framed earlier, if it was really implemented in letter and spirit, then every bioresource-based industry in this country would stop functioning. It was so unpragmatic. So we need to be very, very cautious and create those win-win situations wherein we safeguard our biodiversity, but also kind of enable the ecosystem to use this biodiversity in a legal manner and not under the carpet. A small amendment is also required in the Forest Conservation Act. The Act puts medicinal plants, thoughtlessly, I would say, at par with the rubber plantations. So it says cultivation of medicinal plants would amount to non-forest activity. It does not even clarify that cultivation of medicinal plants or augmentation of medicinal plants, which are native and natural to that ecosystems, at least they are not in violation of the Forest Conservation Act. So sometimes the NMBB would get very mischievous clarifications from the states, from the state forest departments.
So whether this is a non-forest activity or not, we all know growing of native medicinal plants in the ecosystem is not a non-forest activity, but this clarification has to come in the act. So this small little thing go a long, long way. The government is talking of monetization of resources. So a pilot is due for a long, long time now to use some forest areas to give production to the industries in a manner that it helps in conservation as well as also production. When I was in NMPD, sir, people from Japan approached us. Japan is importing about 300 herbs from another competitor country, and they want to strategically move away from that country. So they want to increase dependence on India. So they have questions to ask, can we get some area? Because the standards in countries like Japan are extremely, extremely tough. So, but we could not take forward these partnerships because of the choking provisions in terms of non-use of certain areas and so on. A major thing that is happening all over the forest in the country is exotic alien species taking over the forest floors, especially lantana. While we will not let medicinal plants to be grown, but lantana has overtaken the entire ecosystems. And we are sitting very, very comfortably on this. So forest floor management should be made a part of our working plans as a part of the working plan code so that every state pays attention to forest floor management, especially keeping in view these invasive species. The states should also be asked by the government of India to also map. My colleague was saying that industry should tell us how much demand they have. I would like to put it other way. The ministry should be able to tell the country how much supply it can offer from different parts of the country. So we need to work in that manner and make it more user friendly. I want to say one thing to my younger colleagues that in revision of the scheme that happened for the National Medicine Plant Board, we had put a provision that a special purpose vehicle can be established by industry in conjunction with farmers and take grants from the National Medicine Plant Board. This provision has not yet been used proactively by the industry, so I'm only trying to bring it to your notice. Sir, in the forestry sector, the paper industry and the matchwood industry, they were in a big crisis in 80s and 90s, but they have rose to the challenge and really established excellent rapport with farmers across the country. So the medicinal plant based industries also need to, I will appeal to them to establish agronomy units in their production cycle. And maybe NMPP can start supporting these industries to establish these agronomy units, because then they can take care of traceability and everything that goes with the procurement or institutional reform and so on and so forth. One last thing I would like to say, National Medicinal Plant Board had funded a project to state of Karnataka, the Karnataka Biodiversity Board, and they have done a wonderful job. Meenakshi is here, she was very proactive in kind of formulating this project to map the biodiversity of medicinal plants in the forests of Karnataka. Many surprising findings have come out of that. Thousands and thousands of Ashoka trees, probably 25,000, 30,000 trees of Ashoka have been mapped in the forest, wherein we thought that Saraka Ashoka is not available anywhere in the country. Similarly, a couple of species which were thought to be extinct from the country were also discovered, rediscovered in this kind of a survey by the Karnataka Forest Department and the Biodiversity Board. I would request the ministry to make use of this study and issue directions to all the state forest departments. Acharya Balakrishna was also saying that they need to know what is available there. So every forest department in the country can replicate and scale up this study so that we have country-wide resource mapping, and which will really throw a number of surprises in terms of our knowledge. So this is the last thing that I wanted to say, and thank you very much. Thank you, sir.
It was really an exciting and informative discussion where the experts from different spheres of medicinal plant sector have participated. Now, we may request our distinguished chairperson, Shri Lok Ranjan Ji, Secretary, Ministry of Honor, to address the gathering. For a concluding remark. Thank you, sir. नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जितने विद्वानों ने यहाँ पर चर्चा करी है इस विषय पर, यहाँ पर आकर मुझे बहुत प्रसन्नता ही नहीं है, मुझे काफी सीखने को भी मिला। तो सभी को धन्यवाद। आज के इस आयोजन के माननीय मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के वन विभाग के माननीय मंत्री महोदय, केंद्र सरकार के माननीय राज्य मंत्री महोदय, मंच पे बैठे हुए विशिष्ट अतिथिगण एवं सभा कक्ष में उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज का ये जो चक्र यहाँ पर आयोजित हुआ, इसमें हुई चर्चा के आधार पर मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि नेशनल मेडिसिन साइंस बोर्ड एवं इस क्षेत्र के अन्य जो सभी कर्मठ कार्यकर्तागण हैं, वे इस विषय में उनको इतनी महारत हासिल हो चुकी है कि कुछ क्रांतिकारी आउटकम्स हम उनसे अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं डोनर मंत्रालय, जो कि इस देश के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है, उससे संबंध रखता हूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, वो ये है, जैसे यहाँ भी पता चल रहा है कि इन सभी औषधियों के और ज्यादा उपयोग के लिए हमारी वन भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीज हम अपने पूरे देश के संदर्भ में आज यहाँ पर जान रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में वन भूमि लगभग 3/4 है 6 राज्यों में 8 में से, और पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र का अगर औसत लिया जाए तो भी ये 65% है। इसलिए वन औषधि का अगर उपयोग करना है, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो वहां पर जैसा पूर्ववर्ती वक्ताओं ने भी कहा है, हमको कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना होगा कि वन में नेचुरल तरीके से उग रहे वन औषधि अथवा जो वहाँ की डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए वन औषधियों को उगाना होगा, और उससे जो लोकल कम्युनिटीज का बेनिफिट है उनका अगर उसमें रोजगार का सृजन होगा और उनको उससे अपनी जीविका अर्जन करने में अगर मदद मिलेगी, तभी हम इसको और ज्यादा वहां पर बढ़ा पाएंगे। डोनर मंत्रालय की तरफ से हम लोग अपनी विभिन्न क्रियाकलापों में सभी स्पेशलिस्ट विभागों का मंत्रालयों का सहयोग लेते हैं, और इस क्षेत्र में भी आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व से एक जॉइंट प्रक्रिया हमारी चल रही है, जॉइंट प्लानिंग भी चल रही है। और मैंने जब उसके बारे में यहाँ आने के पहले अध्ययन किया तो मैंने पाया कि लगभग 20 अन्य विभागों के लोग इसमें भाग लेते हैं और सभी ने बड़े अच्छे सुझाव रखे हैं। मेरा अनुरोध ये होगा कि उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए आज की इस कार्यशाला में जो सभी सुझाव दिए जा रहे हैं
उनको मिला के हम एक एक्शनेबल प्लान बनाकर उस पर अग्रसर, और ऐसा करने में अगर किसी भी प्रकार का सहयोग डोनर मंत्रालय की तरफ से अपेक्षित है तो मैं वो जरूर कमिट करना चाहूंगा। सेम प्रक्रिया हम लोग एग्रीकल्चर में कर रहे हैं और साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन से संबंधित मंत्रालयों को साथ में लेकर उससे संबंधित भी प्लान बना रहे हैं कि जो अभी तक साइंस टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स डिफरेंट मंत्रालयों और उनकी संस्थाओं ने, उनको हम लोग किस तरीके से जन आधारित बना सकें, उनके लिए उपयोगी बना सकें। इसी प्रकार से वन औषधि का एक प्रकल्प यदि अगर कोई बनाया जाता है जिससे कि, और ये हमेशा दूसरी तरफ से बनना चाहिए, मेरा ये विचार है। मैंने जितनी चर्चा यहाँ पर सुनी वो इस पर है कि हमारे पास क्या औषधियां हैं और हम उसका क्या कर सकते हैं, उसका हम मैपिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका जरूर किया जाना चाहिए, साइंटिफिकली होना चाहिए। लेकिन उससे हम लोगों को क्या बेनिफिट दे सकते हैं, और उसको कम से कम कुछ क्लस्टर्स में 400, 500, 800 हर उत्तर पूर्वी राज्य में इस प्रकार से चिन्हित हैं, तो 400, 500, 800 में जाने की जरूरत नहीं है। 4, 5, 8 अगर सिलेक्ट कर लिए जाएं और उसके लिए प्लान बनाए जाएं क्लस्टर्स के बेसिस पर, हम वहां से शुरू करते हैं ना कि इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन कुछ होना शुरू होना चाहिए, और वहां पर जो लोग हैं उनमें वो कैपेसिटी जागृत होनी चाहिए कि धीरे धीरे करके वो इसका कंट्रोल थोड़ा लेना शुरू करें। अभी ये सरकारी प्रकल्प है, इसमें हम टेक्नोलॉजी भी डालना चाह रहे हैं, इसमें हम हाई एंड जो रिसर्च है उसको भी डालना चाह रहे हैं, पर इसमें जनसाधारण के लिए इससे एसोसिएट होने का अगर कोई कारण हो सकता है तो ये है कि उनको उससे जीविका, उनको उपार्जन होना शुरू हो, और किस प्रकार से उनको, अगर उन्हें उगाना है वन के बाहर में उगाना है या कलेक्ट करना है, वो कैपेबिलिटी कैसे करना साइंटिफिक रहेगा, कैसे वो जो सब नियम है उससे सम्मत होगा, ये उनको धीरे धीरे करके समझाना होगा। शुरू में जरूर हमें रहना होगा उनके साथ, पर हमारा प्लान एक वास्तविक प्लान होना चाहिए जो उनको 2-3 साल तक जो सपोर्ट जरूर करे, उनको हैंड ओवर जरूर करे, लेकिन उसके बाद में हम उससे एग्जिट भी कर सकें। और अगर उससे ज्यादा एसोसिएशन की जरूरत है तो मेरे ख्याल से उनके बीच में से कुछ लोगों को एक्सपर्टीज दिलाना होगा, किसी संस्था को, लोकल संस्था को उसके साथ एसोसिएट करना होगा जो ज्यादा समय तक उनको गाइड करते रह सके। और ये बात सही है कि ये थोड़ी चिकन एंड एग टाइप की सिचुएशन है कि मार्केट में क्या डिमांड हो रहा है, हम वो कहाँ से, मतलब वो हमारे यहाँ पहले प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमें कहीं शुरू करना होगा। शायद गवर्नमेंट्स का और सभी विभागों का काम भी ये होता है कि जहाँ पर मार्केट फेल कर रही है वहां पर आकर हम लोगों के हित के काम कर सके। तो मैं आज के इस सभा में जो समस्त उपयोगी सुझाव आए हैं, और विभाग की तरफ से, आयुष विभाग की तरफ से उनको मैंने देखा आप सब लोग ने बड़ी कीनली सुना है, और मैं जानता हूं कि उसको आप किसी न किसी उपयोगी डॉक्यूमेंट में रिड्यूस जरूर करेंगे, पर मैं एक अनुरोध जरूर रखना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके हमको कुछ एक्शनेबल प्रकल्प आप बनाएं, और डोनर मंत्रालय की तरफ से हम ये कमिट करते हैं कि उसको प्रोवाइड करने में हम हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। और इसको हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि हमारा अपना रिसर्च, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सब चलते रहना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो फायदेमंद हो सकता है ये हम दिखा सकें सबको, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्षेत्र में लाया जा सके। और इसके माध्यम से ऐसा भी हो सकता है कि जो डिग्रेडेड वन भूमि है उसको भी हम रीजेनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आप सबसे आशा भी रख रहा हूँ, और ये आशा लेकर मैं यहाँ से जाना भी चाहता हूँ कि इसको हम यही इसी कक्ष में डिस्कशन के रूप में छोड़ेंगे नहीं, इसके आगे इसको एक आउटकम नजर में रखते हुए एक आउटकम ओरिएंटेड प्लान बना के इसको रूपायित भी करेंगे। मेरी आप सबसे यही आशा है, अनुरोध है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद माननीय सचिव महोदय। तो बायोडाइवर्सिटी का जो हॉटस्पॉट है नॉर्थ ईस्ट, उसी का मंत्रालय की आप रक्षा करते हैं, और आपका आश्वासन नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के लिए
I think it would be a new beginning and we'll take it forward. जो आपने कहा कि actionable point है, तो आज हमारे 25 MOU भी साइन हो गए, तो हो सकता है डोनर मंत्रालय के साथ वो 2500 का भी आंकड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिस क्षण की हम बहुत राह देख रहे हैं सब लोग बेसब्री से, हमारे माननीय मंत्री जी को कहीं और भी जाना है, तो हम उनको अनुरोध करते हैं कि भूपेंद्र यादव जी को, माननीय मंत्री जी, कि आप संबोधन करें और हमारे सभी को कुछ आश्वस्त करें कि नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड की तहत और आपके मंत्रालय की तहत मेडिसिनल प्लान बोर्ड का आगे बढ़ेगा। प्लीज गिव बिग हैंड। आयुष मंत्रालय की ओर से आयोजित आज किसानों, क्षेत्र के निकायों, उद्योगों और राज्य संघ के प्रतिनिधियों की इस संयुक्त कार्यशाला में उपस्थित मेरे साथी मंत्री डॉक्टर मंजूपुरा जी, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और प्रबुद्ध नागरिकगण जो इस आज की संगोष्ठी में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं विशेष रूप से आयुष विभाग को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक वैश्विक स्तर पर ये निवेश और नवाचार के लिए इस सम्मेलन को आयोजित किया और ये सम्मेलन जिस तरीके से सफल हुआ है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की आयुष के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है और उनका जो दृष्टिकोण है आत्मनिर्भर भारत के प्रति, उसको पूरी तरीके से दर्शाता है और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में आयुष मंत्रालय और ये देश आगे भी बढ़ रहा है। आज के इस कार्यशाला को मैं जब सुन रहा था तो काफी सारे विषय अलग अलग सेक्टर्स ने अपने तरफ से कहे, क्योंकि कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट जो इस सारे उद्योग और संरचना के लिए जरूरी है, उसके संबंध में विषय आया। लेकिन केवल कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट से बात नहीं बनेगी, कलेक्शन के साथ साथ क्वालिटेटिव प्लांटिंग मटेरियल भी हमारे को लगातार अपने वन उपज की दृष्टि से या मेडिसिनल प्लांट की दृष्टि से आगे करना होगा। एक बार अगर किसी भी मेडिसिन प्लांट को अगर आप लेते हैं लगातार, तो उसका रिप्लेसमेंट भी उतना ही जरूरी है और इसलिए इन सब विषयों के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग होना, सिस्टम में सुधार होना, जिसे हमारे कर्नाटक के पीसीसी बता रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें हम क्या नया विकल्प हम दे सकते हैं। और एक और विषय ध्यान में आया कि चूंकि ये भविष्य में आने वाले समय में एक बड़ा उद्योग के रूप में होगा, तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम इसको एक फॉर्मेशन कैसे दें एपीएमसी की तरह। ये भी एक यहाँ पे सुझाव के नाते विषय आया। लेकिन पूरे देश में जिस प्रकार का हमारा एक मेडिसिनल प्लांट का वैल्यू है, हमारे फ्लोरा फोना का हमारा एक महत्व है, तो जो आचार्य बालकृष्ण जी कह रहे थे कि ये बात बहुत जरूरी है कि इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो और उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन में चूंकि बायोडायवर्सिटी में बड़ा महत्व होता है कि कोई पर्टिकुलर पौधा, जब उन्होंने हल्दी का भी उदाहरण दिया कि नॉर्थ ईस्ट के और बाकी के हल्दी के कंपोनेंट में अंतर होता है, तो जो हमें पौधों को पहचानने के साथ उनका जो एक्टिव कंपाउंड क्या है उसकी भी अगर हमें जानकारी हो तो ज्यादा अच्छा है। और हमारे देश का फॉरेस्ट में हमेशा इस बात को मानता हूँ कि दुनिया से हम अलग इस मायने में है कि हमारा फॉरेस्ट जो है, ज्यादातर फॉरेस्ट डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमारे देश में ज्यादा है और अगर हमें फॉरेस्ट को बचाना है तो फॉरेस्ट डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है उनके रिसोर्स को, उनके रोजगार को, उनकी जीवन उपयोगी साधारण चीजों को बढ़ाने के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग देने की विषय बहुत आवश्यक है। उसके साथ ही साथ जो सप्लाई और सस्टेनेबिलिटी, इसका बैलेंस बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे अभी अर्जुन के पेड़ का यहाँ पे बातचीत में उदाहरण भी आया कि आखिर सप्लाई हो रहा है, सप्लाई के साथ हमारी सस्टेनेबिलिटी किस प्रकार से रहेगी। अगर हमने सप्लाई कर दिया और सस्टेनेबिलिटी नहीं रखी तो फिर वापस से इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो सप्लाई और सस्टेनेबिलिटी के साथ ही साथ हमारे देश में
हमारे वन विभाग को, और अभी हमारा 28, 29, 30 अप्रैल को लगातार देहरादून में 3 दिन का हमारे सारे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक लगातार 3 दिन का एक वर्कशॉप भी चलने वाला है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे देश के वनों को क्वालिटेटिव बनाने के लिए अभी जो हमारी फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट भी आई है, और ये संतोषजनक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में हमारे देश में वन क्षेत्र बढ़ा है। हमारे यहाँ पर लगातार स्टडी करने के लिए हर 2 साल बाद एक साइंटिफिक स्टडी आती है, जो हम खुद अपने वन क्षेत्र को दर्शाते हैं, और इस वर्ष में लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग हमारे वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। लेकिन जो हमारा वन क्षेत्र है ये क्वालिटेटिव फॉरेस्ट के रूप में कैसे परिवर्तित हो, फॉरेस्ट रिसर्च के रूप में कैसे परिवर्तित हो। हमारे यहाँ पर एक नया कार्यक्रम अभी फॉरेस्ट ऑफिसर्स को, हमारे पीसीसीएस को भी दिया गया है कि हमारा जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको हम अच्छे फॉरेस्ट में कैसे तब्दील करें, और लगभग एक अच्छा काम भी डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहा है। लेकिन आयुष को अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा, उनका जो संकल्प है उसको पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से दुनिया में जो सर्टिफिकेशन होते हैं उनके मानकों को हम अपने तरफ से कितना उत्कृष्ट बनाए, वो यहाँ पे इस चर्चा में भी विषय है, वो आगे एक विचार करने वाला विषय है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये जो विषय है कि डिमांड एंड सप्लाई, ये तो मार्केट ही तय करता है, ये कोई गवर्नमेंट तय नहीं करती, और ये कर भी नहीं सकते। इसमें रिटायर होने के बाद सुझाव दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो चीज है ये मार्केट ड्रिवन है। हम इसमें फैसिलिटेटर कैसे हो सकते हैं, हम फैसिलिटेटर होके हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो हम सरकार के रूप में अप्रोच कर रहे हैं कि वो सरकार हम एक तरीके से मंत्रालयों का उनके साथ मिलकर के कैसे कर सकते हैं। तो हमारे आयुष मंत्रालय और हमारे स्टेट फॉरेस्ट ऑफिसर मिलकर के ज्वाइंट मीटिंग करके, ताकि जो सारा विषय निकल के आए कि सप्लाई और सस्टेनेबिलिटी, इन दोनों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। जब हम फॉरेस्ट में घूमने जाते हैं और मेरे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ मैं देखता हूँ, तो ये ध्यान में आता है कि फॉरेस्ट अपने आप में एक रीजेनरेट करने की फॉरेस्ट में ताकत है, वो नेचर का सिस्टम है, क्योंकि नेचर भी लगातार परिवर्तनशील है। जो नेचर में रहने वाला जीव है वो उसको इम्पैक्ट जरूर करता है, लेकिन उसका नेचर का जो अपना सिस्टम है, और उसमें हमारा देश बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे पास हमने उस सस्टेनेबिलिटी के चक्र के साथ जीना सीखा है। यही कारण है कि ग्लासगो में जब जलवायु परिवर्तन की वार्ता चली, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पंचामृत का विषय रखा था, तो उन्होंने एक विषय दिया था लाइफ। तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल जो है वो हमारे देश की अपनी विरासत है, और उसी के कारण हमारे आयुष जैसी एक बड़ी विधा ये पूरे देश ने डेवलप करी है। इसलिए कोई जो पुराने व्यक्ति और पुराने आयुष के लोग हैं, वो अगर उसको मेडिसिन प्लांट को यूज करते हैं तो कब यूज करना, कब उसकी पत्ती को तोड़ना, ये भी हमारे शास्त्र में निश्चित रूप से। मार्केट के नाते तो हम फोर्सफुल करके ले आते हैं। इसलिए एक डिपार्टमेंट ने जो बहुत अच्छी पहल करी है कि सबसे पहला है कि उसके अंदर जो हमें इंग्रेडिएंट जो उसमें चाहिए वो सेम है या नहीं है। तो ये मिथ अगर टूट जाएगा कि भाई वो केवल जंगल वाला ही क्वालिटी का है, मेडिसिनल नहीं है, तो अभी हमारे जो एडीजी हैं विभा संजन जी, उन्होंने कहा भी है, वो रिसर्च भी है। इस प्रकार के रिसर्च को अगर हम ज्यादा बढ़ाएंगे, इस प्रकार के तो हम अपनी फॉरेस्ट डिपेंडेंस को भी कम करेंगे और एग्रो फॉरेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे मंत्रालय का स्पष्ट रूप से मानना है कि एग्रो फॉरेस्ट्री के बढ़ने से, विशेष रूप से मेडिसिनल प्लांट की एग्रो फॉरेस्ट्री के बढ़ने से हमारे फॉरेस्ट पे हम एक नई तरीके के बोझे को कम भी कर सकते हैं। अभी कुछ ही समय पहले जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में अगर का बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट का विषय रहता है, आसाम में त्रिपुरा की स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन में वो पौधा होता है, और आईसीआरएफ ने उसकी पूरी स्टडी करके जहां उनकी आवश्यकता थी उन्होंने अनुमति भी प्रदान करी है। उसके साथ ही साथ जो नया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, जिसको अभी पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी के अंतर्गत विचाराधीन है, हमारा ये मानना है कि, और सरकार का भी मानना है कि अगर हमें इसको बढ़ाना है तो अपनी आयुष इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के साथ साथ जो एबीएस है, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग है, जो हमारे डाउन टू अर्थ लोग हैं, हमारे ट्राइबल्स हैं, उन लोगों का भी एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग हो। सरकार इसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध भी है, सचेत भी है। लेकिन ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रिसर्च होना और उसका इंटरनेशनल एकेडमिक स्तर पर इसको मान्यता मिलना, उसके लिए भी हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और
सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कम से कम पर्यावरण मंत्रालय जो है वो रिसोर्स मैपिंग का जो विषय है उस पे पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और एक साइंटिफिक एटीट्यूड की दृष्टि से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर जहां आपस में डबल आता है, जैसे प्लांट वैरायटी एक्ट में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और बायोडायवर्सिटी में दोनों में एक ही चीज का 2 बार हमें रजिस्ट्रेशन करना था। उसमें हम लोगों ने एक पहल करी है कि एक ही डिपार्टमेंट करे ताकि बार बार दिक्कत ना आए उसको। ये सरकार का एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का अर्थ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एक होलिस्टिक तरीके से और जिसमें हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो, हमारे फॉरेस्ट का फ्लोरा फौना का प्रोटेक्शन भी हो, हमारा बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन भी हो। इन सब चीजों को होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के नाते हम लोग आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए यहाँ पर अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट से भी सब लोगों ने विषय रखे तो सबका एक ही उद्देश्य है कि भारत की जो आयुष विधा है, ये आयुष विधा को न केवल मान्यता मिले, इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग से लेकर इसकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के जो आगे रास्ते हो सकते हैं उसको हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसको आगे बढ़ाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व को योग का मार्ग दिखाने के उपरांत आयुर्विज्ञान के माध्यम से दुनिया में भारत की विधा को, भारत की जीवन पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए जो नेतृत्व कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारत का ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच में हम इतना साइंटिफिक एक एटीट्यूड डेवलप करेंगे कि भारत का प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच में एक समन्वय स्थापित होगा और एक विश्व, एक स्वास्थ्य प्रणाली और वसुधैव कुटुंबकम का जो भारतीय दृष्टिकोण है उसको बढ़ाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया, हम सब उसमें एक सकारात्मक योगदान देंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम का समय जो है बहुत Thank you, sir. Your valuable suggestion. We'll take care of all these suggestions. Now I request to CEO NMPB kindly honor the chief guest, the memento for token of gratitude. CEO ma'am. थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको कब तक चाहिए? तालियों के साथ सभी स्वागत करें सबका और तालियों के साथ बैठ के मैंने चाहिए थैंक यू great moment for us. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, sir, for coming and attend this buyer-seller meet. Now we move to the next agenda item where MOUs are to be signed between farmers group and industry. For this, I would like to invite Mr. Saurabh Sharma, Manager Marketing, to take the proceeding forward. I hand over the session to Saurabh Sharma ji. Thank you, Dr. Kavita Tyagi. So NMPB has been working consistently to provide market linkages to the farmers and collectors who are involved in this sector. And through this, we work towards assuring the supply of quality raw material to the industry, and at the same time, we believe that it increases the livelihood of the farmers as well. We understand that buyback agreements, when we look at the buyback agreements, it has to be a win-win situation for both the parties, be it industry or be it farmers or collectors. And industry has been kind enough to share their species-wise demand with National Medicinal Plant Board. And we consistently, on regular basis, share this demand with all the state medicinal plant boards and regional facilitation centers, which are the extended arms of NMPB. And we are very happy to share that with the concerted efforts from all the state medicinal plant boards and regional facilitation centers, today we have this opportunity to sign
we have updated the number. Now we have 50 MOUs which are being signed today. But because we have very less time, so we will facilitate all the RCFCs and SMBVs and all the buyers and sellers who are here for signing of the MOUs. Will request all the groups one by one to come forward and take the MOU copies from here and for the photo session. So we'll first invite State Medicinal Plant Board from Jammu and Kashmir. Dr. Mohan Singh is here, and they are going to sign. They have already signed 3 MOUs today. I'll request all the parties also. We have Sami Labs from the buy side and Farhan Rashid and Cluster. We have Himalaya Research and Lab Jammu and Rajat Kumar and Cluster, and Himalaya Research Lab Jammu again with Romesh Chandra and Cluster. So can we have the photographs for them? Second, we request SMTV Chhattisgarh, Dr. Jens Rao, JACS Rao is here, and they are also signing 3 MOUs. Upo International side, Media and Roberts from the seller side. Inno Global DMCC Dubai, they have taken they have approached the international market also. They have buyer from Dubai as well. Narayan Sankalp Foundation from Raipur. Arya Vedyashala, Kotakal, Crystal Education Society, Raipur. We request you to please come. First time, please, Third in the line, we have MOUs from State Medicinal Plant Board, Kerala. Dr. T.K. Hridik is here. They are going to sign. They felicitated MOU signing for 4 MOUs. The Pharmaceutical Corporation, Kerala Limited, with Mathatur Labour Cooperative Society. Arya Vedyashala, Kotakal, with Mathatur Labour Cooperative Society. Vedya Ratnam, Aushadhi Shala, they are going to sign a MOU with Kera Vishaka Producers and Marketing Company. We have Sitaram Ayurveda Pharmacy, and they are going to sign the MOU with Mathatur Labour Cooperative Society. Can we have the team from Kerala? Both in the line are the host state, Gujarat. They are going, sorry. Recently, has started 1,500 additional. Herbal and Healthcare signing MOU with Gangaram Bhai Patel. We have a team from Gujarat state. They are going to sign 12 MOUs. They have already signed 12 MOUs. Vivan Herbal and Healthcare, Gangaram Bhai Patel, Sunrise Remedies Private Limited, along with Jayesh Bhai, Sri Shankar Ayurvedic Pharmacy. They are signing MOU with Kolacha Harsal Bhai. Herbal Pharma signing MOU. Kapoor Mamaji. Atre Pharmaceuticals with Hari Bhaiji. Shri Swami Atmanand Saraswati Ayurvedic Corporation with Gayatri Ayur Pharma with Dinesh Pelapai. So these are just to name the few. Next in line, we have Telangana State.
We have Deputy CEO Dr. Sudhakar Ramji from the state of Telangana. 25 MOU को लिया है। We invite Dr. Sudhakar. We are facilitating MOU signing for 3 MOU. Can we have Sri Venkateshwara along with Mallikarjun Reddy Cluster? We have Beverages Private Limited along with Sri Balaji FPO and Arogya Rama Herbals with Indian Agri FPO. CEO SMTB, they are going to sign one. They have elicited one MOU between Rajatha Technology Private Limited and Ebuma Farmers. I think we should have a huge round of applause for all the MOUs being signed over here. For Manipur, state of Karnataka, Shri G.A. Sudarshan Ji to come forward. 3 MOUs being signed between Palada Agro Research Foundation with Durga Organic Farmer Group. Second being Pentacare and Sanjay and Cluster. And the third one with High Rich Company and Marish and Cluster. Being from Karnataka. Now we invite team from Tamil Nadu, Shri Thiru S. Ganesh Ji. SMPB Tamil Nadu has facilitated signing of 2 MOUs. First one is between Native Organics International and Indra Ganeshan Charitable Trust. Second is we really appreciate the efforts for signing these MOUs by all our SMPBs and RCFCs. Next, we invite team from SMPB Uttar Pradesh. Dr. Tripathi Ji is here. Yes. Dr. Tripathi Ji is here. They are signing. They have facilitated signing of 2 MOUs. One is the grass cultivation. Again with GVKS Bioenergy Pharma Producer. With again a cluster from Uttar Pradesh. Now we request RCFC of the Fusion 1. We have Saurabh Sharma. Between LR Traders and Ayush Shore. Second one is Morning Hills MPC. Third one is also between the Morning Hills MPC with Alna Group of Companies. We request RCFC of the Fusion 1 to come forward on the scene. We can't hear any applause for the agreements which are being signed over here. It deserves a huge round of applause. Which are here on.
So these 6 MOUs are being signed between Phytobox manufacturers with Sosunam Agro Farmers Producer Company, Greeneco Agro Marketing with Sarvodaya Sabji Utpadak, Janu Life Sciences with Kalpatru, Lama Pharmaceuticals with Saguna Medicinal Plants Pharma Cluster, Vishwaks Maize Herbs and Aromatic Limited with Chai Basa Farmers Collective. Followed by this, I request RCFC Northeastern Region. I request Dr. G.N. Shastri ji, his Director Needs, and Dr. Mohan Lal ji for signing off 2 MOUs between Save the Nature International with Bossing Bongo Farmers Cooperative, the other one with Free Boy Farmers. செந்தில் வாழ்த்துக்கள். போட்டோ எடுத்து குரூப்ல போட்டேன். பிரமாதம். கிரேட் மைல்ஸ்டோன் அச்சீவ்டு. அசோகன் ஐயா கேக்குதா? கேக்குது. பிரமாதமா கேக்குது. சரிங்க ஐயா, அவ்வளவுதான், நம்மளது முடிஞ்சிருச்சு. இதோட லைவ் நாங்க நிறுத்திக்கிறோம். ஓகே. நன்றி, வாழ்த்துக்கள். கங்காதரன் ஐயா ரொம்ப நன்றி. பெரியசாமி ஐயா ரொம்ப நன்றி. நிகழ்ச்சி யூடியூப்ல பார்த்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. Representatives from industry and Mumbai is going to sign an MOU with Amravati. And Mumbai is also signing a MOU with Chakra Vikas Association. Great achievement. Bhakti Tera Producer Company. பேசுறீங்களா? சத்தமா I request இல்ல வெளிய போயிடலாமா? facilitated over there. जिन लोगों की फोटोग्राफ्स हो गई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप बाकी लोगों के लिए स्पेस छोड़ दीजिए. ट्रैली बैग சார் வெளியே ஒரு 2 நிமிஷம் பேசிடலாங்களா? லைவ் ஓடிட்டு இருக்குது யூடியூப்ல. யூடியூப் லைவ் போயிட்டு இருக்கு சார். 2.5 மணி நேரமா ஓடிட்டு இருக்கு. தெரியும் சார், அவர் சாரு போன் போட்டுட்டே இருந்தாரு. ஆமா சார். அப்படி நின்னுக்கலாம். நீங்க பேசுங்க ஐயா. நண்பர்களே வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுடைய சரித்திரத்துல வந்து முக்கியமான நாள் சொல்லலாம். அதாவது நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மெடிசினல் பிளான் போர்டு ஐயா சிஓ கணேசன் ஐயா ஆக்ஷன்ல வந்து இப்ப நாம வந்து 2 MOU வந்து சைன் பண்ணிருக்கோம். 2 அனைவருக்கும் வணக்கம். நமது தமிழக விவசாய பெருங்குடி மக்களின் வாழ்வாதாரம், வாழ்க்கை தரம் மற்றும் அவர்களுடைய செய்யக்கூடிய அந்த விவசாயத்தை மிகவும் லாபகரமாக ஒரு செய்ய வைக்கும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மெடிசனல் பிளான்ஸ் போர்டு தமிழ்நாடு இன்றைக்கு நமது இந்தியா அளவுல, அகில இந்திய அளவுல விவசாயிகளுடையும் 2 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் வந்து உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் வந்து உபயோகிப்பாளர்கள் மூலமா போடப்பட்டிருக்கிறது. இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல வரக்கூடிய காலகட்டத்துல நம்ம வந்து புதிய பயிர்கள், புதிய மருத்துவ பயிர்கள் பல்வேறு இடங்களில் சாகுபடி என்று சொல்லக்கூடிய அதே போல வந்து சதாவரி கிழங்கு போன்ற அனைத்தும் வந்து வேறு மாநிலங்களில் வந்து மிக லாபகரமாக செய்துவிட்டார்கள். அதையும் வந்து நம்ம விவசாய பெருங்குடி மக்கள் வந்து பயன்பெறுவதற்காக அவர்களுக்கு வந்து தொழில்நுட்ப சாகுபடிகளை நம் மூலிகை மருத்துவ கழகம் மூலமாக அவர்களுக்கு பயிற்சி பெற்ற ஏற்படுத்தப்பட்டு ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூசரிங் கம்பெனி என்று சொல்லக்கூடிய விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர் சங்கத்தையும்
நாங்கள் வந்து ஏற்பாடு செய்து அவர்களுக்கு புதிய பயிர்களை வந்து உற்பத்தி செய்து மேலும் பல்வேறு வகையிலும் லாபம் அடைய அந்த விவசாய பெருங்குடி மக்களுக்கு சேவையாற்ற நமது தமிழ்நாடு மூலிகை கழகம் காத்திருக்கிறது என்பதை அன்போடு விவசாய பெருங்குடி மக்களுக்கு தெரிவித்துள்ளேன். புது புது கிராப் யாராவது வந்தா டிக்ளைன் பண்ணிடுங்க. போன் வந்தா டிக்ளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்படிங்கிறாரு. இன்றைக்கு தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய தமிழ்நாடு மெடிசினல் பிளான்ட் போர்டு மூலமாக இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். மரியாதைக்குரிய திரு கணேசன் ஐஏஎஸ் அவர்களும் ஸ்பெஷல் அட்வைசராக பொறுப்பேற்றுள்ள திரு டாக்டர் மணிவேல் அவர் செய்த ஏற்பாட்டில் குஜராத்தில் இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு எம்ஓயை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம். அதாவது டான்சியா தமிழ்நாடு சிறு மற்றும் குறும் தொழிற்சாலைகள் சங்கம் மூலமாக கிட்டத்தட்ட 500 FPO மூலமாக அவர்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்களை வேல்யூ அடிஷன் செய்து அதில் ஆயில் போன்றவர்களெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் செய்து உள்நாட்டில் நாங்கள் தமிழக இந்த மூலிகை அதிக அளவில் அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு டான்சியா இன்றைக்கு இதனை முன்னிறுத்தி செயல்களை நிறைவேற்ற பாடுபட்டு வருகின்றனர். நன்றி, தேங்க்யூ. நல்லா வந்துச்சு, நன்றி. ஆக்சுவலி நம்ம புது புது கிராப் நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அரோமேட்டிக், அதாவது புது புது அரோமேட்டிக் ஆயில் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய, வாசனை எண்ணெய் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய நிறைய செடி கொடிகள்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு குரூப் விவசாயிகளுக்கு வந்து சாகுபடி செய்து அவர்கள் வந்து மிகுந்த லாபத்தை நம்ம ஏற்பாடு செய்யலாம். குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா வெட்டிவேர், யூக்லிப்டஸ் ஆயில், அப்புறம் வந்து துளசி ஆயில், இது மேல இந்த மூலிகை பயிர்கள் மூலமாக தரப்படக்கூடிய அந்த மூலிகை எண்ணெயை வந்து நம்ம ஒரு விவசாயிகளை ஒருங்கிணைத்து அதை செய்து விவசாயிகள் வந்து அதிக லாபம் சம்பாதிக்க நம்ம இந்த ஆண்டுகள் வந்து நம்ம கடைபிடிக்க போகிறோம். இது போல தொடர்ந்து பல்வேறு புது புது யுக்திகளை வந்து விவசாய பெருங்குடி மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்காக நம்ம மூலிகை தாவரம் மூலமாக, தாவர கழகம் மூலமாக செய்யப்படும். தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களும் தமிழக வேளாண்மை துறை அமைச்சர்களும் இந்த மிக முக்கியத்துவத்தை வேளாண்மை துறைக்கு கொடுத்து வருகின்றார்கள். நிதியமைச்சர் அவர்கள் முதல் முறையாக இந்தியாவில் வேளாண்மை துறைக்காக தனியாக ஒரு பட்ஜெட் அறிவித்திருக்கின்றார்கள். எனவே இது போல இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி தமிழகத்தில் இந்த மூலிகை பொருட்கள் மூலமாக பல தொழிற்சாலைகளை உருவாக்குவதற்கு டான்சியாவும் தமிழக அரசும் இணைந்து செயல்படும். தேங்க்யூ. மேடம், நீங்க முதல் முறையா இப்ப பண்ணிருக்கிறீங்க இங்க ஒரு MOU. என்ன உங்களை பத்தி உங்க சொல்லுங்களேன். A pleasant good evening to one and all. I am from Tamil Nadu. I am head Ganeshan. I proudly say our educational institution only. One institution got MOU today, and this program was very amazing. They mentioned that investment and innovation, startup as well as entrepreneurship development, investment and innovation according to the guidelines of NMPB. We have to do. We have 7,500 students in our college. It will be very useful to us as well as our college students. Already we have BNOS. We got sanction of BS program. All official persons and government, state government and central government are appreciated as a lot. Definitely this is a very grateful opportunity. Definitely we can do our level best. என்று சொல்லி அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி முடித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி. நன்றி. எனக்கு அங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. கருப்பையா இவங்களை பாத்துக்கங்க. நான் அங்க போட்டு வாங்க சார். லைவ் போயிட்டு இருக்கு. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். லைவ் போயிட்டு
சார் இப்ப கருப்பையன் சார் உங்களுடைய கருப்பையன் சார் உங்களுடைய அனுபவத்தை சார் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டேம்கரோட ஜெனரல் மேனேஜர். நானா தான் இருக்கேன். இப்ப வந்து நம்மளோட நோயை வந்து அழிந்து வரும் மூலிகை தாவரங்களை வந்து புதுப்பிச்சு அதை வந்து விவசாய மத்தியில நிறைய வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா மூலிகை தாவரங்களை வச்சுதான் எல்லா வகையான மருந்துகளும் தயாரிக்கிறோம். அதுல வந்து நிறைய தாவரங்கள் மக்களோட பயன்பாட்டை இல்லாத விட்டாங்க. அதெல்லாம் நம்ம மீட்டெடுத்து அதை வந்து நம்ம மருந்து தயாரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயன்படுத்தணும்ன்றது நோக்கத்தை தான் நாங்க செயல்படுத்திட்டு இருக்கோம். அதை வந்து நிறைய விவசாய மத்தியில இது நிறைய அவங்க அதை பயிர் வச்சு அது மூலயமா அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை கொஞ்சம் மேம்படுத்தலாம். அதுதான் எங்களோட நோக்கம். அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு அனைவரும் இதை இந்த நலமுடன் இதை வந்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. கருப்பையன் சார் நீங்க லைவ் போயிட்டு இருக்க சொல்லுங்க. நீங்க தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு இது மருத்துவ மூலிகை தாவரங்களுடைய பயிரிடுதல் பற்றிய ஒரு புதிய 2 ஒப்பந்தங்கள் தமிழ்நாடு இது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவே நல்ல தொடக்கமாகவும் இது மேலும் நிறைய ஒப்பந்தங்கள் செய்து தமிழ்நாடு மருத்துவ மூலிகை தாவர பயிர் நல்ல வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் திரு எஸ் கணேஷ் ஐஏஎஸ் அவர்களும், திரு பி மோகன்ராஜ் ஐஏஎஸ் அவர்களையும், திரு டாக்டர் மணிவேல் சார் அவர்களும், திரு ஜெயபிரகாஷ் கன்சல்டன்ட் மற்றும் அனைவரும் உறுதுணையாக இருப்பவர்களுக்கு நன்றி கூறி ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தும். நீங்க பேசுங்க. நண்பர்களே ரொம்ப நன்றி. அதாவது இது ஒரு பெரிய கிராண்ட் சக்சஸ் தான் சொல்லணும். இந்த சின்ன துவக்கம் தமிழ்நாட்டுல வந்து கூடிய விரைவில் வந்து மாவட்ட வாரியா வந்து மெடிசினல் பிளான்ட் வந்து நம்ம பெரிய அளவில் கொண்டு போகிறோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப இமீடியட்டா வந்து திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல வந்து ஒரு 200 ஏக்கர் வந்து அஸ்வகந்தா வந்து கவர்மெண்ட் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபார்மரை வச்சு போட வைக்கப்படுற ஒரு ப்ரொபோசல் ஆல்ரெடி ரெடி ஆயிடுச்சு. கூடிய சீக்கிரம் டிஸ்கஷன்ல வந்துடும். ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணும்போது அஸ்வகந்தா மட்டும் இல்லை, எல்லா மூலிகை பயிரும் நாங்கள் ஷார்ட்டா கொண்டு போகிறோம். ஒரு நோயில்லா பாரதத்தை உருவாக்குறதுக்கு தமிழ்நாடு ஒரு பெரிய இதா நிற்கும் அப்படிங்கிற நாங்க பதிவு பண்ணிக்கிறோம். நன்றி வணக்கம். இதுவரை இதை நன்றி வணக்கம். வாழ்வோம். நான் ஒரு 2 நிமிஷம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்க வந்து நேட்டிவ் ஆர்கானிக்ஸ் இன்டர்நேஷனல் அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து நாங்க ஒரு கம்பெனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். எங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, மக்களுக்கு வந்து மிக குறைந்த விலையில தரமான மருந்துகளை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதே நேரத்துல வந்து ஃபார்மரும் பயனடையணும் அப்படிங்கிற 80-20 பிரின்சிபல் ரூலை நாங்க ஆதாரமா வச்சு நாங்க வந்து இந்த நேட்டிவ் ஆர்கானிக்ஸ் இன்டர்நேஷனல் அப்படிங்கிற கம்பெனி தொடங்கி இருக்கோம். நாங்க வந்து கிரையோஜெனிக் பல்வரைசர்ல வந்து மூலிகை வாசனை பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே அரைச்சி பவுடர் பண்ணி அந்த பவுடர் மெட்டீரியல சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளூயிட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற மிஷின்ல போட்டு அதுல கிடைக்கிற ஆயில் ஓலியோரிசினை வந்து மேற்கொண்டு மைக்ரோனைசேஷன் அந்த மாதிரி பல்வேறு மெத்தட்ல ஆக்டிவ் இன்கிரீடியண்டா பிரிச்சு எடுக்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கம். கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த திட்டத்துல வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கிற லாபத்துல 20% வந்து ஃபார்மருக்கும் கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு நாங்க வந்து பயன்படுத்த போறோம். இந்த உன்னத நோக்கத்தோட தான் நாங்க வந்து இணைந்து இருக்கிறோம். இதுக்கு வந்து உறுதுணையா இருக்கிற தமிழ்நாடு தொழிற்சாலைகள் சங்க தலைவர் திரு மாரியப்பன் ஐயா அவர்களுக்கும், தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மெடிசினல் பிளான்ஸ் போர்டோட சிஇஓ திரு கணேசன் ஐயா அவர்களுக்கும், தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மெடிசினல் பிளான்ஸ் போர்டோட அட்வைசர் திரு கருப்பையா சார் அவர்களுக்கும், அதுக்கப்புறமேட்டு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மெடிசினல் பிளான்ஸ் போர்டோட அட்வைசரும் எங்களுடைய வழிகாட்டியுமா இருக்கிற திரு மணிவேல் ஐயா அவர்களுக்கும், எங்களோட இணைந்து வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்ல எம்ஓயு சைன் பண்ண இந்திரா கணேசன் எஜுகேஷனல் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் சேர்ந்த மேடம் டாக்டர் விஜயபானு அவர்களுக்கும், டெல்லியில டெப்டி டைரக்டர் நேஷனல் மெடிசினல் பிளான்ஸ் போர்டு டாக்டர் முருகேஸ்வரன் ஐயா அவர்களுக்கும், மோகன்ராஜ் ஐஏஎஸ் ஐயா அவர்கள் நோடல் ஆபீசர் ஸ்டேட் மெடிசினல் பிளான்ஸ் போர்டு தமிழ்நாடு அவர்களுக்கும் நாங்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இவர்கள் இத்தனை பேருமே நமக்கு உறுதுணையா இருந்ததுனாலதான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சக்சஸா பண்ண முடிஞ்சது. அதுவும்
இங்க இருந்த மினிஸ்டர் பேர் என்ன? குஜராத் மாநிலத்தை சேர்ந்த குஜராத் மாநிலத்தை சேர்ந்த தொழில்துறை அமைச்சர் மற்றும் ஆயுஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த துறை அமைச்சர்கள் அனைவருக்குமே நாங்க நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பிரதமர் முன்னிலையில வந்து MOU வந்து சைன் ஆயிருக்கு. நேத்து வந்து பாரத பிரதமர் அவர்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஆரம்பிச்சு நடத்தி வந்து மெடிசின்ஸ்க்காக வந்து ஆயுஷ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் கவுன்சில்னு ஒரு புது எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் கவுன்சிலும் நேற்று திறந்து வச்சிருக்கிறாங்க. அதனால இனி வேலைகள் எல்லாம் வேகமா நடக்க போகுது. எங்களோட யார் வேணாலும் இணைந்து எந்த FPO வேணாலும் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல ரெடி பண்ணி வியாபாரம் பண்ணணும்னு நினைக்கிற FPO எங்களோட இணைந்து செயல்படுறதுக்கு எங்களை அணுகலாம். நாங்க இந்த நம்பர் கீழே கொடுக்குறோம். எங்களுடைய மொபைல் நம்பர் 9865351935. எப்ப வேணாலும் நீங்க எங்களை கூப்பிடலாம். நேட்டிவ் ஆர்கானிக்ஸ் இன்டர்நேஷனல் எங்களோட கம்பெனி நேமு. இந்த வீடியோஸ்க்கு கீழே மற்ற லிங்க் ப்ரௌச்சர் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு நாங்க அனுப்பிச்சு தரோம். நீங்க எப்ப வேணாலும் எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். இப்ப நீங்க ஒரு MOU போட்டிருக்கிறீங்க, உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. உங்க கம்பெனி மதுரை திருமங்கலம் கப்பலூர்ல வந்து நாங்க அண்ட் ஆயுர்வேதா மெடிசன் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றோம். எங்களோட மருந்து கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா கடந்த 62 வருஷமா நாங்க வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல வந்து நாங்க இது வரைக்கும் ட்ரேடர்ஸ்ல தான் நாங்க வந்து ரா மெட்டீரியல் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். இப்ப இந்த MOU திருச்சியில வந்து இந்திரா கணேசன் இன்ஸ்டிடியூஷன் மூலமா வந்து நாங்க அந்த வாங்கூர் இப்போ வந்து MOU நாங்க போட்டதுனால எங்களுக்கு வந்து இன்னும் எங்களுக்கு ஃபார்மர்ட் வந்து வாங்கும்போது எங்களுக்கு விலையும் வந்து ரொம்ப கம்மியா கிடைக்கும். வேணுங்கிற பொருளை அவங்ககிட்ட வந்து நாங்க வாங்கிக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப இதா இருக்கும். டான்சியா மூலமாகவும் இதை 38 மாவட்டத்துக்கும் இந்த மூலிகைகளை வந்து பயிர் செஞ்சு இதை உற்பத்தி பண்ணி விலைக்கு வாங்கி நாங்க இது வந்து விலைக்கு வேல்யூ அடிஷன் வந்து நாங்க பண்றோம். நாங்க அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு டான்சியாவோட தலைவர் திரு மாரியப்பன் அவர்களுக்கு நாங்க நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். மேலும் இந்திரா கணேசன் இன்ஸ்டிடியூஷன் உள்ள அவங்களோட செக்ரட்டரி மற்றும் சேர்மன் அவர்களுக்கும் நண்பர்களே, கால நேரம் கருதி நிகழ்ச்சியத்தோட முனைத்துக் கொள்கிறோம். மேற்கொண்டு ஏதாவதுன்னா போன்ல கூப்பிடுவோம். அனைவருக்கும் நன்றி. நிகழ்ச்சியை வந்து யூடியூப்ல லைவா பார்த்துட்டு இருந்தோம். நிகழ்ச்சியை வந்து யூடியூப்ல லைவா பார்த்துட்டு இருந்தவங்களுக்கும் ஜூம் லிங்க்ல